Moving ahead, I will request Mr. Akhilesh Gupta, Regional Sales Manager, DSF Tata AI Life Insurance Company Limited. So he is going to share his views on embracing the digital revolution can benefit SME in the life insurance segment. Over to you, Mr. For Gupta. giving us opportunity to ask about in importance for SME in in life insurance segment. That's I am from Tata AIA and I just want to give some brief about the importance of insurance in MSME. So I'm not talking about only Tata AIA. I'm just asking about whole the insurance industry. First, I just want to ask अभी जो हमारा डिजिटलाइजेशन हुआ है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आफ्टर कोविड भी आप लोगों ने देखा होगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो बूमिंग है 22% से ग्रो हुआ है एवरी ईयर और सेकेंडली फॉर स्पेशली एमएसएमई के लिए हमारे पास में अभी हम लोग ये बोलते हैं कि एमएसएमई में आप लोग पैसा जो भी स्मॉल इंडस्ट्री है आप लोग अपना पैसा कमा रहे हो आप लोग सारा ग्रो कर रहे हो सारी चीज़ें हैं एज अ इंश्योरेंस जो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप अपने पास में आपका रिस्क आपका जो मैं बात कर सकता हूँ थोड़ा सा टेंशन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द फाइनेंस काइंड ऑफ थिंग्स वो आप हम लोगों को दे सकते हैं रीजन बीइंग वी हैव सम ऑप्शन फॉर स्पेशली फॉर एमएसएमई जो आप लोगों का होता है एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं जब आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो और वो बहुत बड़ा हो जाता है तो हमारे पास में मैंने जो अभी तक जितने इंडस्ट्रीज से बात किया है जो मेन मेन जो प्रोपोर्शनेट आता है वो ये आता है कि हमारे पास में एम्प्लॉय का रिटेंशन होना जरूरी है जो एम्प्लॉय आपके साथ शुरू से काम कर रहा था वो लास्ट तक होना चाहिए प्लस आप लोग पैसा आप कमा रहे हो पर उतना टाइम नहीं होता कि आप आपके टैक्सेशन के ऊपर ध्यान दे पाओ या फिर और भी मतलब लाइफ सिक्योरिटी ये सारी चीजें होती है तो एज अ इंश्योरेंस इंडस्ट्री और एज अ टाटा AIA we have some solution like we have employer employee kind of scheme we have keyman insurance I am not talking about the 100% की मैं आपको अभी पूरा एक बार में टाइम बहुत कम है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं बट आई जस्ट वांट टू से कि सम पॉइंट्स है जहां पर आप लोग आपका पैसा कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर थ्रू इंश्योरेंस थ्रू योर फर्म आप वहां पर बचा सकते हो इसके अलावा आप हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा एवरीबडी इज हर्ड अबाउट कैफे कॉफी डे मतलब आप सब जने बिजनेस इंश्योरेंस में है तो बिजनेस इंडस्ट्री में तो आप सब जने जानते हैं ठीक है कि जहां पर कोई भी की पर्सन होता है उसके साथ में कोई भी अगर मतलब इन केस कोई भी मिस हैपनिंग या कोई भी चीज होती है तो वहां पर जो मेन रोल होता है वो इंश्योरेंस का होता है सो आई एम अर्ज टू ऑल ऑफ यू कि जो भी ऐसी स्कीम्स होती है जहां पर अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नए स्टार्टअप है आप सब जन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आपका ग्रोइंग हो रहा है आप लोग मे भी बहुत ज्यादा ग्रो कर भी लोगे वहां पर बट आपकी जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी है प्लस आपके पास में जो विजिबिलिटी है इंपॉर्टेंटली जो आपके पास में जो मेन ओनर है जो की पर्सन है उनके लिए आप किसी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को आप अप्रोच कर सकते हो जो आपको कुछ डायनेमिक सॉल्यूशन दे देंगे जिससे आप अपना पैसा कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर 37(1) के अंदर भी बचा लेंगे सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल अबाउट दी कि मैं टाटा से हूं तो केवल आपको टाटा के लिए बोलूंगा आई एम आस्किंग कि आप कहीं पर भी इंश्योरेंस सॉल्यूशन जो आपके बिजनेस में आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं इवेंचुअली अगर मैं डिजिटलाइजेशन की बात करूं अभी आप देखेंगे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सिंस 3 to 4 ईयर डिजिटलाइजेशन को पूरा एक्सेप्ट किया हुआ है फॉर एमएसएमई में अगर हम बात करें पहले हमारे पास कुछ फॉर्म्स हुआ करते थे जैसे अभी मैंने काफी कुछ एसबीआई का सुना कि लंबी फॉर्मेलिटी होती थी सारी चीजें होती थी एवरी बैंकिंग मतलब बैंक इज एक्सेप्टेड डिजिटलाइजेशन एवरी इंश्योरेंस कंपनी इज एक्सेप्टेड दैट डिजिटलाइजेशन और वहां पर जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट और कोर एरिया है फॉर क्योंकि आप लोग पूरी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहे हो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाने में आप लोग मदद कर रहे हो सो वी एज अ कंपनी वी एज अ इंडस्ट्री वी आल्सो अर्ज कि हम लोग आप लोगों का कुछ मदद कर पाए ड्यू टू योर स्ट्रेस फ्री टैक्स लाइबिलिटीज और आपका स्ट्रेस फ्री जो भी आपके पास कवर या सारी चीजें उसमें हम हेल्प आउट कर पाए तो काफी कुछ ऐसे सॉल्यूशंस है हम लोगों के पास में एज अ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जहां पर आप लोग उसको आप इजीली उसको एंजॉय कर सकते हैं सेकेंडली जो हम लोग अभी बेसिक देख रहे हैं फॉर इंश्योरेंस आफ्टर कोविड हम सब लोगों ने देखा कि एक ट्रेंड हो गया अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ग्रोइंग है वो 32% से 33% एवरी ईयर हो गया जीडीपी में ग्रोथ की अगर बात करो तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है दैट इज चार्ट बाय दी कि वो काफी मतलब एनहेंसिव ग्रोथ कर रहा है अभी कस्टमर भी काफी हमारे यहाँ पर नॉलेजेबल है तो ये सबसे बड़ा सेगमेंट है और एज अ कंपनी या
एज अ इंडस्ट्री हम लोग हमेशा इस चीज के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं कि हम एमएसएमई को कैसे सपोर्ट कर पाए। ड्यू टू देखिए पैसा हर व्यक्ति कमाता है और आप लोग कर रहे हैं ग्रो इंडस्ट्री में, आप लोगों का काफी ज्यादा मतलब है योगदान, हम बात करेंगे तो आप लोग कर ही रहे हो, बट आई एम अर्ज टू यू कि कुछ ऐसे टूल्स हैं जहां पर आप अपने आप को, आपकी कंपनी को मतलब टैक्सेशन के अंदर और इंश्योरेंस के अंदर आप लोग हेल्प कर सकते हो। इफ यू रिक्वायर एनी सपोर्ट, सो एनी इंश्योरेंस कंपनी इज देयर, वी आर रेडी टू सर्व यू एनी टाइम, मतलब वॉट एवर यूर क्वेरी, अगर आपको कोई क्वेरी भी होता है सो वी आर रेडी टू एड्रेस इट। ठीक है, तो हमारा बेसिक जो है वो उसी चीज के ऊपर, और डिजिटलाइजेशन प्लेटफॉर्म का मैं टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री आज की डेट में एक उदाहरण है जहां पर हमने टोटल इवन जिस चैनल को मैं हेड करता हूं हमारा पूरा डिजिटलाइजेशन के ऊपर ही वहां से लीड जनरेट होता है। तो पहले इंश्योरेंस ऐसा होता था कि एजेंट टू एजेंट डीलिंग होता था, नाउ वी हैव अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने लिए केवल क्वेरी रेज करके आप सारी चीजें कर सकते हो। फॉर एमएसएमई वी हैव अ इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर ऊर्जा जहां पर आप लोग जाके या आप कुछ भी करके आप लोग ले सकते हैं। सो यू रिक्वायर्ड एनी हेल्प सो प्लीज आस्क अस। थैंक यू सो मच। So any question for sir? कुछ अगर क्वेश्चन है तो we can have it immediately. Urja, yes. So Urja is a campaign for us right now. We just asked about that. As a company, Tata here, we are just thinking about how we serve service to SME. Actually, we have a different segment for SME right now. Urja is a campaign where we got the leads like this event is coming. If you have any query, so you can register us कि आपने कोई query हमें किया है as a businessman, तो आपके पास में जो एम्प्लॉय स्कीम है या जो हम लोग, मैं आपसे रिटेंशन की भी बात कर रहा था, आपके अगर 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सो आई एम आस्किंग, एक छोटा ओवरव्यू दे देता हूं मैं। अगर मैंने आपको एक एम्प्लॉय स्कीम में रजिस्टर्ड किया हुआ है तो मेरे पास में दो स्कीम है, उसके अंदर स्कीम ए और स्कीम बी। स्कीम ए के अंदर अगर मैं ऐसे नॉर्मली बात करता हूं, मैंने आपके एम्प्लॉयज, आप एज ए एम्प्लॉयर आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ प्लानिंग किया हुआ है फॉर देयर इंश्योरेंस, क्योंकि आपके लिए वो इंपॉर्टेंस एसेट है। और हम ये रिटेंशन में इसलिए बात करते हैं, अगर एम्प्लॉय आपके साथ लॉन्ग टर्म से जुड़ा हुआ है आप उसको मैक्सिमम बेनिफिट्स देंगे। जैसे मैं मेरी कंपनी में टाटा में काम कर रहा हूं, टाटा इज डूइंग मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मी फॉर मेडिक्लेम एंड इंश्योरेंस एंड फॉर माय फिजिकल सेफ्टी, आपने वो दिया हुआ है, तो फिर हम उस स्कीम का रेशियो करेंगे तो आपका एम्प्लॉय जो वो रिटेन रहेगा। ऊर्जा इज एन कैंपेन जो आपको टैक्सेशन के अंदर 37(1) के अंदर हम लोग आपको कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर छूट के अंदर हम लोग कैसे करते हैं, सो वी लॉन्च अ स्पेशल कैंपेन फॉर दिस दैट इज कॉल्ड ऊर्जा, जहां पर केवल हम एसएमई के अंदर डील करते हैं, ओनली एसएमई। उसके अलावा हमारे उस सेगमेंट के अंदर एम्प्लॉय स्कीम और हमारा कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट ये सब पे हम लोग बात करते हैं। इट इज दी ऊर्जा। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? हाँ हाँ हाँ, वो मैं बोला, मुझे ऐसा बोला था पूरा एलिब्रेट नहीं करना। ओके, सो हेलो, हाय। एक्चुअली मैंने जो भी आपको थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है, सो मैं थोड़ा सा उसको अगर ब्रॉडली भी अगर आप लोग सुनना चाहें तो मैं 2 मिनट आपको प्रॉपरली बता सकता हूँ। वी हैव सम स्कीम्स लाइक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय स्कीम बोलते हैं हम लोग उसको। अभी बहुत सारे यहाँ पर होंगे, आई डोंट नो, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, सॉरी अगर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ तो एनीबडी इज नोइंग अबाउट, आप सब जने एंटरप्रेन्योर हैं, कोई नए नए आप लोगों का बिजनेस स्टार्टअप हुआ है, समबडी इज डूइंग, अभी मैंने सुना किसी ने 4 लाख से 1 CR का अपना टर्नओवर किया है, सो इट्स अ बिग टास्क। आपके पास एम्प्लॉयज भी होंगे, सारी चीजें, एनीबडी हर्ड अबाउट इट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम? क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आई एम डूइंग ए सेमिनार इन दुबई, हमारे खुद के टाटा स्टील के डिस्ट्रीब्यूटर थे बड़े बड़े, जिनका टर्नओवर आप सब जने जानते हैं कितना होगा, कोई 100 करोड़, कोई 1000 करोड़, कितना टर्नओवर था उन लोगों का। बट व्हेन वी प्रेजेंट ऑन दैट कि डू यू नो अबाउट कि आप अपना पैसा बचा सकते हो, तो ही सेड हमें नहीं पता। ही अर्न रुपीज इन करोड़, बट ही इज नॉट नोइंग अबाउट कि मैं कैसे मेरा पैसा और जगह से, कॉर्पोरेट टैक्स वो पे करते हैं, सब करते हैं, अपने एम्प्लॉय का रिटेंशन भी चाहते हैं कि मेरे एम्प्लॉय मेरे साथ रहे, बट कैसे रहे वो उनको नहीं पता था। सो एनीवन इज हैविंग एनी आइडिया अबाउट इट, व्हाट इज द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम? एनीवन? तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट सेगमेंट। देखिए मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंश्योरेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंशियल सेफ्टी,
योर टैक्स प्लानिंग। मैं जो आपसे बोल रहा था कि मैं आपका थोड़ा टेंशन रिड्यूस करना चाहता हूँ, पैसा आपको एसबीआई से मिल जाएगा, मैनी बैंक से मिल जाएगा, आप पैसा बना लोगे, आप कमा लोगे, सब कर लोगे। मैं उसके आगे की बात कर रहा हूं, जब आप बड़े हो गए हो, आपने अपना कर लिया, अब आपके पास में 3 ऑप्शन है मेरे यहां से। मैं आपको बोलता हूं, मैं आपका टैक्स भी बचा लूंगा, ठीक है, मैं आपको इंश्योरेंस भी दे दूंगा, और मैं आपको आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी भी दे दूंगा। ये तीनों चीजें, अगर 3 चीजें मैं एलेबरेट करता हूं, दैट इज कॉल्ड अवर स्कीम। पहला स्कीम जो मैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, वहां पर 2 तरह से हम लोग काम करते हैं। पहला, आप ओनर हो, आपने पॉलिसी अपने एम्प्लॉयज के लिए ले ली। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने अपने एम्प्लॉय के लिए पॉलिसी ले लिया कि आपने आज कोई प्लान बोला कि यार मेरे पास में 100 एम्प्लॉय हैं, मुझे उनकी फाइनेंशियल सेफ्टी भी चाहिए और सारी चीजें चाहिए। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, वी आर ऑफरिंग यू दी स्कीम कि आपने आज ये प्लान लिया हमारे पास से, और उसका जो प्रीमियम है दैट इज पेड बाय द कंपनी। आपकी जो कंपनी है वो प्रीमियम पे करेगी। वो प्रीमियम का पूरा टैक्स बेनिफिट जो मिलेगा वो किसको मिलेगा, कंपनी को, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। हम यहां पर 2 ऑप्शन क्रिएट करते हैं कि अगर आप चाहो तो आगे जाके वो पॉलिसी आपके एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हो। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, जो भी अभी आप बेनिफिट ले रहे हो वो आप 37(1) के अंदर ले रहे हो। आपके कॉर्पोरेट टैक्स आप लोग पे करते हो ना, उसमें 25% तक आप लोग यहाँ पर जा सकते हो। अगर आप अपना एक कॉर्पस लिए रहेंगे, डिटेल में आप कभी भी रहेगा, यहाँ डेस्क पे आप कभी भी आके मुझे पूछ सकते हैं। हम आपको ऐसा ऑप्शन देते हैं जहां पर आप अपने एक्सपेंस में आपने पैसा दिखाया, ठीक है, और वो टैक्स बेनिफिट आपने लिया, आप आगे जाके वो पॉलिसी आपके एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हैं, जिससे आपका रिटेंशन रिटेंशन मतलब आपका एम्प्लॉय आपके साथ में हमेशा रहे। जो एडिशनल फैसिलिटी आप देते हो आप वो भी कर सकते हो। सेकेंडली, वी ऑफर कीमैन। कीमैन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो मेन पर्सन है आपकी कंपनी के, देखिए आज इंपॉर्टेंस है, अगर उस पर्सन को कुछ हुआ, आज लाइफ की किसी की मतलब वो नहीं है विजिबिलिटी, नोबडी कैन नो। आज हमने कोविड टाइम में सारी चीजें देखी है, अब कोई एज फैक्टर लाइफ में रह नहीं गया है। अभी एज फैक्टर ऐसा है कभी कुछ भी हो जाए। कीमैन में हम लोग क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंस पर्सन है आपकी कंपनी के, उनके लिए हम इंश्योर करते हैं, जिससे वो नहीं रहे या कोई चीज हो तो आपके पास वो फाइनेंशियल लायबिलिटी जो वो आदमी आपको कमा के दे रहा था, आपकी कंपनी नहीं रुकनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम लोग देखते हैं कि बिजनेस में पीढ़ी दर पीढ़ी काम होता है, हम भी वही बात कर रहे हैं। हम भी आपको ये बोल रहे हैं कि कीमैन आपने लिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पर्सन का इंश्योरेंस है, सारी चीजें हैं, तो जो रिस्क लायबिलिटी थी आपकी कंपनी के ऊपर उसकी, वो हमारे पास में आ जाएगा। So we have some options, employer employee keyman, HUF, MWP, you all knows about it। तो ये बेसिक हमारा है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के अंदर आई अर्ज टू ऑल ऑफ यू कि आप एक बार उसको समझो। आप लोगों के लिए जितना टर्नओवर या जो भी चीज है, सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और ये बहुत अभी छोटा सेगमेंट है। अगर मैं नॉर्मल बात करूं, ये एमएसएमई के अंदर मुश्किल से 5% लोड सिक्योर्ड है। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है आपकी, पर केवल ये 4 से 5% है। अगर आप वाकई में उसके ऊपर थोड़ा सा उस पर फोकस आ जाए, और मैं इस चीज को मैं भी मानता हूं एज ए इंश्योरेंस इंडस्ट्री, अभी हम लोगों ने फोकस किया है सिंस 2 to 3 इयर्स एमएसएमई के अंदर इंश्योरेंस ने एंटर किया है प्रॉपरली। इससे पहले जो इंश्योरेंस होता था, आप अपने फैक्ट्री की जो मशीनरी होती है उनका इंश्योरेंस कराते हैं, एग्रीकल्चर का इंश्योरेंस कराते हैं, बट जब मैं ये बात करता हूँ कि सर आपने अपनी कंपनी के लिए आपको सिक्योर किया है क्या, तो वहां पर आंसर मुझे बहुत नॉमिनल मिलता है। ठीक है, तो आपके पास में ऑप्शन है, आप 37(1) के अंदर हमारा कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है उसको आप सेव कर सकते हैं। आपके एम्प्लॉय के लिए रिटेंशन के लिए उनको आप प्लानिंग कर सकते हैं। इवेंचुअली कोई एम्प्लॉय अगर उस समय नहीं है तो वो लायबिलिटी भी आपके ऊपर आती है एज अ ओनर। अगर आपका कोई बिजनेस है और एम्प्लॉय के साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो गया तो कहीं ना कहीं वो इंश्योर्ड अगर नहीं है तो आप उसकी हेल्प करते हो। तो आई एम सेइंग, अगर आपने वो स्कीम में रजिस्टर्ड किया हुआ है तो वो पैसा उसकी फैमिली को वहां से मिल जाएगा। आप उसके अंदर नॉमिनी भी रह सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। आप प्रोपराइटर हैं, आप चाहते हो मेरी फैमिली के, अब मैक्सिमम फैमिली बिजनेस होता है, भाई मैं डायरेक्टर हूं, मेरा बेटा और वो सब एम्प्लॉय है, ऐसा हम लोग भी करते हैं। वहां पर भी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। एवरीथिंग फॉर यू। और एज अ टाटा एआई वी आर सिटिंग ऑन नंबर 3 कंपनी राइट नाउ विदाउट एनी बैंकिंग सपोर्ट। टाटा इज नंबर सिटिंग ऑन नंबर 3 विदाउट एनी बैंकिंग सपोर्ट। और सबसे बड़ा सेगमेंट है हमारा, और वी आर दी ओनली पर्सन फॉर इंडस्ट्री, अगर आप देखेंगे, जो ऊर्जा को इतना प्रमोट कर रहा है। और हम लोग इस कैंपेन के ऊपर 100%, और दैट इज डेफिनेटली से बाय मी, कि आगे आने वाले समय में या जैसा इंश्योरेंस अभी बढ़ा है उस तरीके से आप लोग काफी प्रमोट होते हुए देखोगे इसको। थैंक यू सो मच। A couple of questions for you actually.
let's talk about some practical thing actually in the SME business. SME typically stands for businesses worth 5 crores to 50 crores. They employ approximately 10 to 50 employees, right? So, couple of questions for you now. What is the rule for employees who are drawing a salary of 10 to 15K and above, right? So you have to get them insured, whether it is compulsory, whether it is not compulsory. That's the first question. Second question is that do we have to give them life plus medical both, or you have both the things combined together on only life? Because at this moment, the most simplistic thing that we go for is that there is a new India insurance policy named Employee Workmen's Compensation Act, right? And under Workmen's Compensation Act, there is a very difficult thing that you have to go through courts, etc., to get the amount settled for your employee. So, whether what are the convenience thing for you in this particular thing, so that we can shift our Workmen's Compensation Act to you, right? And give us a practical example that let's say if a SME is 10 to 20 employees and they are having salaries of 10 to 20K per month approximately. So what will be the premium for your from your company with regards to giving them life plus medical both? Okay. So, sir, I just want to ask the first question for your side. We have we required only 8 employees, right? In your company you have 8 employees, so we are registered on that scheme, employer employee. First is this. Second thing, we as an insurance company, that's both department are different. One is belongs to life insurance, which I am handling. One is belongs to general insurance. But I am not saying we are not offering both, because we have two companies. We have Tata AIG, we have Tata AIA. So that's premium, because the life insurance and the health insurance, it is not combined as an individual plan or a premium. That's both entity are different. Secondly, what you are asking me, हमारा जो बेसिक है वो ये है कि हमारे पास 8 एम्प्लॉई हैं और आपका फर्म है, आपकी बैलेंस शीट और ये सारा जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूँ। हमारे डिजिटलाइजेशन टूल इतना ज़्यादा हो गया है। पहले अगर मैं बात करूँ, लाइक अगर एसबीआई के सर यहाँ पर हैं, सबको पता है कि आज से 10 साल पहले फॉर्म पे सब चीज़ें भरना और वो सब चीज़ें स्टार्ट होता था। इट इज़ ऑल्सो टिपिकल फॉर यू, इट इज़ ऑल्सो टिपिकल फॉर मी, ये क्वेरी वो क्वेरी। राइट नाउ वी हैव एन पोर्टल, हमारे पास पूरा का पूरा डिटेलिंग है वहाँ पर। हमने आपसे पूरा डिटेलिंग एक ही बार में ले लेंगे। आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी फॉर्म्स हैं, हम एक ही बार में मांगेंगे और एक ही बार में पूरा अपलोड होगा। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा हमारा आगे जाएगा ही नहीं। व्हेन वी हैव मतलब टेकन होल द डॉक्यूमेंट, सारी चीजें हो जाएगा। हम यहाँ पर आपकी अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल वायबिलिटी, योर बैलेंस शीट, और सेकेंडली जो आपने बोला प्रीमियम, प्रीमियम इज डिपेंड ऑन एज। Like you have an employee that's age is 25 and that's income is 20,000 rupees, so that's premium should be on lesser side. If the person who are sitting in the age of 38 or he is also earning 20,000 rupees, so that's premium should be on different side. So we have a combined chart जो हम पूरा आपको बना के देंगे, जहां पर आपका पूरा प्रीमियम आ जाएगा। एक ही चेक से आपका वो पूरा प्रीमियम पे होगा, बट प्रीमियम डिफर करेगा फॉर लाइफ इंश्योरेंस। But sir, two questions still unanswered. That do you have to give the compulsory insurance to your employee? That is one particular thing. As per I do not know the rule. Although I do it for my employees, but I do not know the rule that particular thing. Second thing is that you said medical and life. You have both different departments. Can you combine it together and give us a particular solution? Because SMEs these days suffer in this particular regards. They cannot run to each and every place, right? And just last question, sir. And as far as the employees are concerned, you do not have fixed employees. So there is no, you cannot calculate the age also, right? So this is the main challenge. Why I had gone for Workmen's Compensation Act, that is the typical reason behind this, that they do not ask you the name of the employee also. You just have to maintain your muster, right? And for 10 unnamed people, they give you the insurance. No, it is it's not part by the government side right now. That's we have the registered with IRDA, so it is mandated by IRDA. Whatever employees taking the benefit and the employee not name should be there, because without employee के नाम की insurance policy नहीं हो Sir, सकती। in the middle of the Sir, year, in the sir, middle can of we the can we have the detailed discussion later, because we have ये Okay. चलेगा। other speakers also. अब आपके पास जब भी टाइम हो हम उधर ही हैं, 5 मिनट आप कभी भी आके हम इस पर करेंगे, ठीक है? Any other specific question?
Okay. So we'll move on. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. So apart from this, as you likely said, you want some sort of information on the general insurance also. If you have some specific question or specific request, you can give it to us. We will channelize you with the general insurance team also. Won't be any problem. तो जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के जितने प्रोडक्ट्स है उससे ज़्यादा भी जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर बिजनेस we have not taken that topic today, but definitely we have a team, the other team also. We can rope in them. But meanwhile, if you have something, you can approach to us. Now I'll request Mr. Sarfraz Khan, proprietor Green Energy Solar System, to talk on the greener and more profitable tomorrow with renewable energy. So he is going to talk about the renewable energy and solar. Over to you, sir. Yeah, hi, good morning to all of you. I would like to thank everybody available here and thanks for giving an opportunity. My name is Sarfaraz Khan and I am a proprietor. My company name is Green Energy Solar System and we are authorized channel partner with Tata Power Solar. India is one of the largest solar integrator company and having an experience of installation couple of megawatts in the region also. तो बेसिकली जो एक चीज़ थी अर्लियर द रिक्वायरमेंट वाज रोटी कपड़ा मकान अभी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट हैज बीन द इलेक्ट्रिसिटी इज द अगेन बेसिक रिक्वायरमेंट in today's day. So specifically for the industries also, none of the investment will give you the return as high as solar energy because the daily power tariff has been increasing day by day and also creating an adverse effect to the environment, affecting day-to-day lives also, affecting the health also, affecting the natural resources also, what we are utilizing the conventional power. So, of course, there is a need to change these things and to move or to get turned from this conventional resources and to use the renewable energy uh, to reduce the hazardous effect which is causing due to the conventional fuels. So, as a partner of Tata Power and as an emerging sector in the field of energy, and yeah, it is. Yeah, so here I'm just going to give you a brief idea about the renewable energy and its advantages and about a basic detail about Tata. Tata is a renowned name and one of the most trusted brand in India and internationally also. So why to go with the solar power and why to choose Tata only? Because it's a huge investment and the costing for the total which is required here because we all are the industrialists and the SMEs. Money saved is money earned instead of going to earn the money. It's been more important to save what the money we have already and whatever we are investing to get the best out of it. So powering India's rooftop energy, some of the installation we have from Tata Power and understanding the benefits of solar. So basically a typical rooftop system, what we use to install and the things which is included in that. It's a solar module, basically a solar panel, what we call a solar module. And the module mounting structure comes along with that, solar inverter, meters, and conventional grid supply electricity to the premises. How a solar rooftop system works? It's basically generating an electricity and supplying directly to your homes, and the excess energy is getting fed up into the electricity grid. Benefits of going solar, it can reduce 80% of your electricity bills. And payback period generally depends on the size of the system, might be from 3 years to 7 years. Independence from rising electricity tariff. Electricity tariff increased by 50% plus in 5 years times in many states. And for the MSME sector also and the industries also, there is some indirect benefit what the government is providing. It's an accelerated depreciation of 40% tax benefit in the first year of the commissioning of this business. This is the graph showing the impact of solar electricity bills illustration from first year to 25 years. It's approximately 30-35%
returns what we are getting from the solar, and it's been increasing day by day. Some of the FAQs regarding the solar rooftop working. The solar capacity has been calculated as per the unit consumption what we have for your home, also for your industry or a factory or any of the commercial space wherever you are have a use for the solar or having a electricity consumption capacity that can be installed. Some of the basic requirement we have: a shadow free area, space we need to have there for the solar installation, and sanction load from the electricity department. And how do the solar panel work? A solar module are made up of silicon wafers, and it converts a semiconductor material photon particles of light from the sun. Radiation knock out electrons when they fall on the wafers, and direct current electricity flow in established using the semiconductor properties. And the other thing is that the solar system produce electricity from solar during the grid outage. The solar system connected solar rooftop system does not produce electricity from the solar during grid outage. Solar system that has equipped with the batteries not only provide backup but also generate electricity using solar during the grid outage. If nobody is at the home during a daytime, is solar generation wasted? No, the solar electricity is not wasted. It is not being consumed by the premises. Even even if you are running the industry or any of the this commercial space at your home also, if we are on a holiday, the solar is not on a holiday. It will generate the electricity even the holidays also. That is an added advantage to us, and that can be saved through the net metering policy what we have in the region. Whatever the electricity which is unused can be restored, can be stored in the grid, and whenever and we have a requirement of it, they will get back to us. At the end of each period, customer is credited for excess generation export to the grid as per prevailing state policy, and charge only for net consumption from the grid. About the Tata Power Solar, Tata Power is the India's largest integrated power player, having some of the conventional business model what we have: thermal power, hydro, waste heat, wind, solar, module manufacturing, transmission and distribution also. Tata Power Renewable Energy, creation of India's largest renewable platform, more than 600 plus megawatt module and 400 plus megawatt cell manufacturing at Bengaluru under construction, 4 gigawatt solar cell and 4 gigawatt solar module manufacturing company. Large project EPC portfolio, 11.5 gigawatt, 1800 plus megawatt installed, 200 plus 50 districts and 1 lakh plus pumps. And we do have the EV charging stations available with us, like 3,700 plus charging points, 38,000 plus home chargers, and 200 plus bus charging points. This is some of the credential of Tata Power Solar. As you know about the Tata Group, it's a #1 solar rooftop company, life cycle service and support for the installation. That this is very important actually. From whomsoever you are installing a solar, need to know about the backup and the profile of the company. Is they able to provide you the proper services, maintenance and the warranty support also, because it's a long-term project. It's not for a year or two, it's a 25 years project. Because the module performance warranty comes approximately 25 years and it has a lifespan more than 30 years. The solar is the oldest company in a solar roof, this 30 plus years of experience of Tata Power Solar. Tata Power rooftop project portfolio. Some of the clients what we have in our portfolio. Some of the awards and recognition what we got in the solar energy sector. And we do have a tie-up with the banks like State Bank of India, which is supporting us and have some schemes available for the SME sector. I think it's some Surya Shakti. Surya Shakti is there, which we are able to take approximately a loan for 4 CR, I think, sir. That is approximately for a 1 megawatt installation. We have a collateral-free loan from State Bank of India. And we requested to State Bank also to get it feasible for the residential also in a solar energy. We had this discussion last time. Last time we had that discussion in a meeting. And powering premises across customer, some of the things we need for this. What the Tata Power Solar is offering: on-site rooftop, on-site ground-mounted solar installation,
Also the floating solar on water bodies within the premises. Captive, group captive, open access, third party open access. If anybody had a need to have a inquiry for this, please we'll discuss this. For a captive also and for the open access also, there is a various and different schemes available from MSABCL. So we can go as per the requirement what we have. The type of system what we have, it's a grid connected system, battery based system, micro inverter based grid connected system. The product range for a grid connected has been 1 kilowatt to megawatts, best quality panels, inverters, and other components for maximum generation design life, remote monitoring on the mobile, web interface suitable for any customer segment with shadow free rooftop and ground mounted. A battery based system is suitable for home and the isolated areas where the power grid connectivity is not available, so we can go for the off grid system also. So it's basically a dependency what we have on the grid, which is will get rid of it. Microinverter based grid connecting system, and everything which comes for installation is a complete package comes from Tata, whether it's a structure, whether it's a panel, whether it's an other balance of system material. So it's a one point contact for claiming service backup or need to have a warranty assistance or anything. So it's better to go or to ask for solar from a Tata only, because give you the one point solution for it. Some of the business models offering from Tata Power Solar and some of the segment we can install a solar. It's a capex, that is the customer invest 100% of the project cost for setting up the solar project. Of course, the State Bank is available there to provide a support. Capex plus finance, customer take loan from part finance of the project cost. Tata Power facilities financing option, and a collateral free option is also available. OPEX is a Tata Power will set up the solar system for the customer. Customer has to pay only the unit generated at pre-agreed rates. A leasing model is also available. Customer to pay an EMI amount for a particular tenure, after which they can purchase the plant at the residual value. A group captive for the customer to invest minimum 7.8% of the project cost, equivalent to 26% of the equity amount. Factor to keep in mind while evaluating your solar partner. Some of the factors that we need to get evaluated before selecting a solar partner or for a solar agency: 25 years warranty for the solar, credibility, trust, investment protection, lifetime service assurance, solar PV insurance, and best return on investment and superior safety. Wide suited of offering rooftop solar floating, and this some of the things that we are offering. And easy finance option is also available for the industries and for the commercial also. Some of the case study for a Tata Power Solar. It's an automobile industry. Annual 168 million units power requirement for the facility with a flat daily demand. Reduction in power purchase cost to procure power from 100% renewable source. A site survey was done. The client premises was Tata Power engineering team, space available, and saving approximately 30 to 40% saving on each solar unit generated, and also saving 7,000 tons of carbons year on year. Some of the other case studies for the on-site capex case study and group captive case study is there. Residential installation we do, some of the photographs for that. What do our client says, customer says about Tata Power? Some of the customer's testimonial is available here. And thank you. If anybody has anything or any clarification or any doubts regarding a solar installation or any finance assistance, so please be free to ask. Yes. Per kilowatt is subject to the site condition, and where we need to install a solar depends on that. Site specification is the area required, structure, type of the structure, and where we need to install. That will come
approximately it's 55 to 60,000 rupees. It comes in a range, 55 to 60, depend on the system size also. If it is a smaller size, it comes 55, 60,000. And if it goes up to a larger scale, it might come to 45 to 50,000 also. Yeah. Do you also sell power? Like Yeah, what are we the do have, but that is in the open access we do, Okay. not on the smaller scale. So we need about 5 megawatts. Yeah, we can do that. Okay. Yeah. Okay, thank you. Anybody else? Yes, sir. There is a yeah. Yeah, there is a scheme from a government also. They are doing it on a very subsidized rate. But there is a problem. Ah. The government has the norm. If I have the electricity pole nearby my Yeah, particular yes, area, yes. I do not get it. Yes. But they do not provide it electricity for long term. Yeah. Isn't it? So that is the problem we are facing. Okay. I think you should put one step forward for us. Yeah. So we do have the pumping solution for a solar, but there is a parallel scheme that has been running by the government of India also. So they are providing a good amount of subsidy on that solar water pump. If there is such a scheme from your side, you will get lakhs of customers immediately. Okay. So we are waiting for that. I am the sufferer of it. Okay. Isn't it? We have the power, we have the poles, we have electric lights and all that, but without power. Okay. Power shortage. Okay. I request you to come forward for this. Yeah, we'll get back to you. It will be a noble cause. Yeah, we'll note it down. We'll get back to you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Sarfaji. Thank you very much. I'll request those delegates who are taking a tea, take a tea and be comfortable. Not any issue. So I will invite now Mr. Jaideep Motiram, Tahsildar. He is a manager business development multi-commodity exchange of India Limited. It is MCX, and he is talking about the base metals hedging risk management tool. When you are going with the financing and everything, this is one of the best option. It's a hedging. So over to you, sir. Yeah, good morning, all. It's indeed a pleasant and great honor to be a part of this event. Myself, Jaideep Tahsildar, a part of business development team located in Mumbai, Maharashtra. So, talking about M6, the journey started in 2003. So, we do have 9 international commodities, wherein there is base metals, bullions, energy, and agro commodities. So we are the number one commodity in India, commodity exchange in India. On an average, we do have more than 1,000 crore of volumes daily basis. So talking today's my topic is base metal risk management. So base metal, talking about base metal, as I mentioned, we have base metal. So what is base metal? So all non-ferrous metals, copper, zinc, aluminum, lead, nickel, right? So MSME और ऐसे फर्म जो इन मेटल से या मेटल के कारोबार से एंगेज है, तो दैट इज कंटिन्यूस, उसका यूजेस होता है, एप्लीकेशंस होता है, ओके। इनका एक चीज है कि द एप्लीकेशंस एंड यूजेस, द डिमांड इज ह्यूज, रीजन स्पेसिफिक है, क्योंकि माइनिंग जहां पे होती है वो रीजन स्पेसिफिक है, बट अगर इसका यूजेस और एप्लीकेशन देखोगे तो वर्ल्ड वाइड है, डिमांड वर्ल्ड वाइड है। So the important factor is the recycling. So what is hedging? So today we are going to talk, I am talking about more than 15 minutes or approx 15 minutes hedging क्या है. So normally when I am talking about hedging, so hedging के लिए क्या जरूरी है? तो एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे बेहतरीन प्राइस डिस्कवरी हो सके. तो अगर मैं बात करूँ मेटल्स की, तो दे आर इन कंटिन्यूस साइकिल होती है, माइनिंग, रिफाइनरी, देन मैन्युफैक्चरिंग, अगेन रिसाइकलिंग. तो उसके लिए बेहतरीन प्राइस डिस्कवरी की जरूरत है, जो प्लेटफॉर्म एक्सचेंज प्रोवाइड करती है. ओके, सो हेजिंग इस प्लेटफॉर्म से होता है. डिलीवरी सॉल्यूशंस, वी डू हैव अ गुड वर्ल्ड क्लास डिलीवरी सॉल्यूशंस.
सो अगर रिस्क क्या इन्वॉल्व है, प्राइस रिस्क, सो आई हैव सम नंबर्स, फैक्ट एंड फिगर्स विद मी. इफ यू कैन सी ओवर हियर, 5 साल के वॉलिटिलिटी के नंबर्स दिए हुए हैं. सो 2016-17 टू 21-22 के नंबर्स हैं वॉलिटिलिटी, इन टर्म्स ऑफ वॉलिटिलिटी, प्राइस वॉलिटिलिटी. सो ऑन एन एवरेज, इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम इज विटनेसिंग एनुअलाइज वॉलिटिलिटी ऑफ 30.60%. यानी ऑन एन एवरेज अगर कोई फॉर्म बोलो, यूनिट बोलो, ही इज एंगेज इन एल्यूमिनियम, उसका मैन्युफैक्चरिंग बोलो या फिर अदर प्रोसेसिंग बोलो, सो उसकी जो प्राइस रिस्क है वो 30.60% की है. सो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं 100 करोड़ का जिसका टर्नओवर है, सो इस प्राइस रिस्क इज अप्रॉक्स 30.60 करोड़. सो डू यू थिंक इतने प्रॉफिट मार्जिन होते हैं क्या? मे बी पॉसिबल है, कुछ प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट मार्जिन 30 से बेहतरीन हो या ज्यादा हो, बट ऑन एन एवरेज यानी प्राइस रिस्क ज्यादा है. इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ कॉपर, अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिछले 5 साल के एनुअलाइज प्राइस रिस्क की वॉलिटिलिटी के नंबर्स डाले हुए हैं. सो ऑन एन एवरेज यू विल सी, सो एनुअलाइज जो प्राइस वॉलिटिलिटी है वो 20.18% के आसपास है. अगेन अगर कोई फर्म कॉपर के बिजनेस में एंगेज है, मैन्युफैक्चरिंग बोलो, इंपोर्ट बोलो, एक्सपोर्ट बोलो, स्क्रैप से रिलेटेड बोलो, सो उसका 100 करोड़ का अगर एनुअलाइज टर्नओवर होगा तो उस पर 20.18 अप्रॉक्स करोड़ का वॉलिटिलिटी रिस्क रहेगा. सो व्हाट इज हेजिंग? सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हेजिंग, सो देयर आर टू वेज. इसको देखने के दो नजरिया हो सकते हैं. एक, या तो उसे इग्नोर करो, आज प्रॉफिट नहीं हुआ है, अपने जो भी एक्सपोजर्स है, आज हमें मार्जिन्स को कॉम्पेंसेट करना पड़ रहे हैं, मार्जिन्स अच्छे प्रॉफिट नहीं मिल रहे, तो लेट इट बी, अगले साल या उसके अगले साल हम लोग कवर कर लेंगे. एंड वन, देयर इज अ वे टू गो एंड hedge your exposure on exchange platform. So what exchange platform provide you is, we do have metals, that is base metals, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कमोडिटी एक्सचेंज, सो व्हाट वी हैव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. सो व्हाट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इज लाइक, देयर इज एक्सपायरी, ओके, मेटल्स के कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं. सो फॉर टाइम वी हैव 3 लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आप उस पर हेज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक्सपोजर है, मैं आज अगस्त के 1 तारीख पे हूँ, सो आई कैन, जितना मेरा रेशियो है यानी जितना मेरा एक्सपोजर है, वो मैं, अगर मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकती है, तो आपका जो भी एक्सपोजर कभी ट्रांसिट में होगा या फिर आपके पास स्टोरेज में होगा, तो उसका अगर आपको प्राइस रिस्क एलिमिनेट करना है, तो यू कैन शॉर्ट योर पोजीशन विद द रेशियो व्हाट यू हैव एक्चुअल फिजिकल, उसको शॉर्ट करके आप रुक सकते हो. और एक चीज है, जब आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, आप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पॉट और फिजिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज ट्रेडेड और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, वहां पे आप केवल मार्जिन्स देखे, वो एक्सपोजर, यानी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जितना टर्न, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 मेट्रिक टन का अगर कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, ओके, तो उसका जो भी वैल्यू बनेगा उतना पैसा पूरा डालने की जरूरत नहीं है. व्हाट वी हैव टू पुट इट, वी हैव टू पुट approximately 10 to 15% of margin and you can hedge your positions. So whenever, अगर ऐसा कभी होता है कि 15-20 दिन के लिए लगता है कि there is volatility and there is chance that price may appreciate or get depreciate, so अगर depreciate होती है, you can go and you can short your positions and accordingly आप केवल 10-15% के मार्जिन से, इनिशियल मार्जिन से आप आपके पोजीशन शॉर्ट कर सकते हैं. and again you can buy over there and liquidate your positions, and again you can not making profit, but you can eliminate your price risk, you can balance your margins. So importers और exposures है, exporters है जिनको ये रहता है normally. So what we have 5 metals, that is aluminium, copper, zinc, lead and nickel, okay. उनके आप एवरेज वॉल्यूम्स अगर देखें तो वो फैक्ट एंड फिगर्स डाले हुए हैं यहाँ पे. सो कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, वी डू हैव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे सारे एल्यूमिनियम के कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं. मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है. मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स 1 मेट्रिक टन के हैं, वही बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स 5 मेट्रिक टन के हैं.
सो एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी होती है, यू कैन टेक योर पोजीशन विथ इनिशियल मार्जिन्स. These are the delivery centers. If you are going for delivery, we do have system delivery centers. So these primary delivery centers of all products, that is aluminium, we have Raipur, Chhattisgarh, and we do have additional delivery centers for Maharashtra, Haryana. Accordingly, copper, lead, aluminium, nickel and zinc, we do have centers, additional centers as well as primary delivery centers for copper Thana, lead Chennai, and nickel we have at Thana, zinc we have Thana. So additional centers we have. So what type of product we have? जो अगर आप बात करें प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन की या क्वालिटी के, so we do have aluminium में TUDU के 5 metric ton के as well as मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, जिसकी मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ जो ट्रेड होते हैं. वही कॉपर में भी TUDU के 2.5 मेट्रिक टन के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है. लेड निकल जिंक के सेम TUDU के 5 मेट्रिक टन के एज वेल एज मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स 1 मेट्रिक टन के अवेलेबल है. सो ये ऑल डिलीवरी वाया MCCL हमारा एक और एक संस्था है जिसमें MC क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, जिसके थ्रू जितने सारे डिलीवरी होते हैं उसकी नंबर्स है आपके पास. ये वेयरहाउस के स्टॉक्स हमारे पास जो अवेलेबल है हो, और ये वो सारे लिंक है जो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है. सो स्पॉट मार्केट प्राइस रेट्स आपको डेली 12 बजे और 5 बजे जो भी उसमें चेंजेस होते हैं वो अपडेटेड मिलते हैं. वेयर हाउसिंग चार्जेस कितने हैं, कैसे हैं, वी डू हैव एक्सपर्ट टीम्स जो इसके यानी इसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देती है. वेयर हाउसेस इन्वेंट्री कैसे है वो आपके हमारे वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो. सो लास्ट पर नॉट लीस्ट, डू एंड डोंट्स. अगर आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आना है, यू हैव टू ओपन योर अकाउंट विद ट्रेडिंग मेंबर दैट आर SBI एंड अदर मेंबर्स आर देयर, लाइक बैंक बोलो या फिर डायरेक्ट ब्रोकर्स बोलो. सो डू एंड डोंट्स, यू हैव टू रजिस्टर विद ऑलवेज विद रजिस्टर मेंबर्स. अपना एक्सपोजर KYC अपडेट रखना चाहिए. एंड मार्केट में रूमर्स काफी होते हैं, बाय एंड सेल्स के काफी मैसेज पे ट्रेडिंग्स होती है, वो सब अवॉइड करना चाहिए. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम. एनी क्वेश्चंस? यस सर. सेक्टर में बिलोंग करता हूँ और ये मेटल के बारे में इतना मेरा कोई जानकारी नहीं है. तो एज अ इंडिविजुअल, इन व्हाट वे आई कैन गेट कनेक्टेड टू दिस MCX? Sir, as an individual, you can have your demat account, okay, wherein you will get आजकल कोई भी ट्रेडिंग जैसे मैंने कहा रजिस्टर मेंबर्स होते हैं, एक्सचेंज के क्लाइंट्स होते हैं रजिस्टर मेंबर्स. सो वी आर बड़े लीडिंग मेंबर्स है, बैंक ब्रोकिंग है, उनसे आपको एक अकाउंट खुलवाना होता है. अकाउंट खुलने के बाद आजकल बैंक्स एंड अदर ब्रोकर्स गिविंग 3+1 अकाउंट, दैट इज जहाँ पे आपका डिमेट भी खुलता है इक्विटी का, वेरिन करेंसी और कमोडिटी का अकाउंट भी खुलता है. वहां आप कमोडिटी सेगमेंट में डायरेक्टली एज एन इंडिविजुअल मार्जिन पे करके आप ट्रेड कर सकते हो. एनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया आज दिस इज SME कॉन्फ्रेंस जहां पे मेटल्स रिलेटेड ज्यादा बात की. अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1 ग्राम सोना, वी डू हैव बुलियन. आई सेड कि सोने का 1 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है, जिसकी लागत अगर आपको उसमें ट्रेड करना है, अगर आप बाजार में फिजिकल में ट्रेड करने जाते हो तो आपको 1 ग्राम अगर 60,000 की तोले से बात करूं तो 1 ग्राम के लिए 600 650 लगेंगे, सॉरी 6,000 6,500 लगेंगे. ऑन MCX प्लेटफॉर्म यू कैन जस्ट पुट इनिशियल मार्जिन ऑफ 10%, दैट इज अराउंड 600 एंड यू कैन ट्रेड. यानी आप आपके अकाउंट में ट्रेडिंग यानी डिमेट में नहीं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे रख सकते हो खाली 6.5 की लागत से. एंड वेन एवर यू विश टू कन्वर्ट हिम इनटू डिलीवरी, तो आप उसको डिमेट फॉर्म में भी ले जा सकते हो कॉमर्स से, और उसको वापस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भी ला सकते हो. अकॉर्डिंगली यू कैन गो यू वेरिन जब आप डिलीवरी पे जाते हो तो आपको पूरा पैसा भरना पड़ता है. कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ पे वी कैन गेट सम मोर इंफॉर्मेशन ऑन दिस? सर जितने भी रजिस्टर मेंबर्स हैं MCX के, उसके पास आपको रेडिली अवेलेबल होंगे, या फिर आई एम देयर, आई कैन गाइड यू.
अकॉर्डिंगली आपका एमसेक्स के वेबसाइट पे या कस्टमर सपोर्ट पे आप डायरेक्टली कॉल करके भी ये जानकारी ले सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू। Thank you very much, sir. Now, moving ahead, we have Mr. Nagesh Rane, Marketing Area Head, Arise IIP India. He is going to talk about the emerging business investment opportunities in Africa region. Good afternoon all. Namaste. Thank you so much all attendees and respected speakers and guests. And thank you so much SME and their team to give me opportunity to present myself on behalf of this wonderful platform. आई थिंक आप लोग सरप्राइज हो गए होंगे तो मैं अफ्रीका बेच रहा हूँ, यहाँ कोई 6-6.5 फुट का कोई निग्रो खड़ा होगा और वो आपको कुछ प्रोडक्ट बेच रहा होगा, पर यहाँ तो इंडियन खड़ा है. बट नो वरीज, वी इंडियन now leading globally. So I am an Indian and I am Maharashtrian from Bombay. My name is Nagesh Rane and I am here to represent Arise. Abhi Arise means Arise IIP, Arise Integrated Industrial Platform. We are basically eco-industrial SEZ park developer. Basically Arise is a joint venture company between African government and some private funders. And we have strongly presence in West Africa as well as Central Africa. We have more than 6 clusters in 16 countries of Africa like Benin, Togo, Nigeria, Ivory Coast, Gabon, and many more. And we are not a standard eco-industrial park developer. We are not giving you only space or like unit or PEB shade कि आप आ जाओ और अपना यूनिट चालू कर दो. We are giving you all type of support like marketing support, financial support, legal support, technical support, raw material support, as well as manpower support. We have one single window clearance, like you can get all approval of your important documents, like starting from company formation to all compliances and approval is taken care by one single windows of government. Like we have in every SEZ park we have government office. Like we have 3 storage building, ground floor पे reception and parking है, first second floor पे government office, banking office बैठता है, third floor पे हम बैठते हैं. तो अगर आपको कोई भी चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है तो आपको एसईजेड पार्क में के बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं. एवरी वन फ्रॉम द गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लेकर बैंकिंग सेक्टर वही बैठा हुआ है. आप मेरी टीम, अराइज की टीम 24/7 आपके लिए काम करती है. आपको डेस्क से उठना भी नहीं है, आपके कैबिन से बाहर भी जाना नहीं है, फैक्ट्री से बाहर भी जाना नहीं है, सब आपके टेबल पे काम हो जाएगा. एंड वी हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूएस एंड यूरोप. तो बिकॉज ऑफ दैट एक तो कस्टम ड्यूटी नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, एंड सेकेंड जो भी टैक्सेस है आपकी कमाई पे वो जीरो है, नो टैक्सेस ऑन योर इनकम. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अट्रैक्टिव सब्सिडीज फ्रॉम अफ्रीकन गवर्नमेंट. सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू कन्वर्ट योर ग्रॉस मार्जिन टू नेट मार्जिन, ऑब्वियसली अगर नेट आपको टैक्सेस ही नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, टैक्सेस गवर्नमेंट को टैक्स देना ही नहीं, तो ऑब्वियसली आपका ग्रॉस मार्जिन तो नेट मार्जिन में कन्वर्ट हो गया. अगर कोई 100 करोड़ की कंपनी है इंडिया में बैठी हुई है, अगर आप उसके ओवरऑल अगर एक्सपोर्टर है तो अगर आप टैक्स रेशियो देखोगे तो 20 से 25% है, 20 से 25 करोड़ तो गवर्नमेंट के पास ही चला जाता है. बट हमारे यहाँ वी हैव एसईजेड में वी हैव फ्री जोन फैसिलिटीज, नो टैक्सेस, नो ड्यूटीज एंड ऑल. तो वो आपका ग्रॉस मार्जिन नेट मार्जिन में कन्वर्ट हो जाता है. आपको अपना रियली बिजनेस अगर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, आपको आपका जो बिजनेस मॉड्यूल है वो विद इन 3 इयर्स में एक सक्सेसफुल मॉड्यूल बनाना है, ब्रेक इवन 3 इयर्स में लाना है, तो प्लीज अफ्रीका एक्सप्लोर कीजिए. बी अ पार्ट ऑफ द अराइज फैमिली एंड इन्वेस्ट इन अराइज. बेसिकली अराइज जो है ना, वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका, स्टार्टिंग फ्रॉम वहाँ के रोड्स, वहाँ के पोर्ट्स, वहाँ की एयरलाइंस, वहाँ के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टेकिंग केयर बाय अफ्रीका. एंड हमारा मेन मोटो पैसा कमाना नहीं है, हमारा मेन मोटो है वहाँ के जो लोकलाइट्स है उनको एम्प्लॉयमेंट देना. वहाँ का जो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है, जैसे बेनिन में कॉटन काफ़ी है, गैबॉन में टिम्बर ज़्यादा है,
फिर अगर एग्रो में बात करोगे तो आप एग्रो में कैशू है, पाइनएप्पल्स है, देयर लॉट्स ऑफ फार्मिंग ओवर देयर। तो पहले क्या होता था, वहाँ की काफी ग्लोबली लोग वहां से सब चीजें इंपोर्ट करते थे, एंड प्रोडक्ट अपने कंट्री में बना के ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा था, जीडीपी हेल्प नहीं हो रही थी, बिकॉज ऑफ दैट थिंग अराइज इंटर एंड वी सेड कि बॉस वी विल टेक केयर ऑफ इंटायर एवरीथिंग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम करेंगे, एंड यहाँ का जो एंड रॉ मटेरियल है उसको हम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने पहले गेबॉन में एक टिम्बर जो एक्सपोर्ट हो रहा था, रॉ लकड़ा जो वहाँ की फार्म फॉरेस्ट काट के वो हमने बंद करवा दिया, एंड ग्लोबली जितने भी फर्नीचर्स मैन्युफैक्चरर्स थे इटली से, इंडिया से, उनको बता दिया कि भैया अभी यहाँ से कोई भी लकड़ा एक्सपोर्ट नहीं होगा, अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो आप गेबॉन में आइए, अपनी फैक्ट्री लगाइए। पहले तो चीजें लोगों ने काफी लाइटली ली, पर उनको सचमुच पता चला कि गवर्नमेंट सचमुच बैन किया, तो सब फैक्ट्री वहां आके अपना एंड प्रोडक्ट बनाना चालू किया। सी वी आर giving a benefit to obviously industrialization, than local government and then localized people. तो ऑब्वियसली इंडिया से कोई वहाँ फैक्ट्री लगाता है तो ऑब्वियसली दे हैव लॉट्स ऑफ, दे विल थिंक कि बाबा टैक्सेस क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होगी। तो वी हैव ऑफ दैट ऑल द मैनर्स हमने सोच के इस तरह से स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की, और 12 साल हो गए गेबॉन में, मोर देन 100 कंपनीज फ्रॉम ग्लोबली, वहां से इंडिया से ही 10 से 12 प्लेयर्स है। ग्रीन सेंचुरी इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, अभी उनका वहां सेटअप है। तो अभी क्या हो रहा है वहां पे कि जितना भी लकड़ा है वही कट के वही एंड प्रोडक्ट बन के ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है। तो उसी तरह वी आर प्लानिंग टू डू ऑल रॉ मटेरियल वहां से एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके ग्लोबली हम सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग वी आर ट्राई टू अप्रोच ऑल द एक्सपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, लाइक आर टारगेट इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल हो गया, एग्रो हो गई, प्लास्टिक हो गई, फार्मा हो गई, इस तरह की इंडस्ट्री को हम अप्रोच कर रहे हैं कि यू प्लीज आप आइए हमारे SEZ में अपना बिजनेस एक्सपांड कीजिए, वी विल गिव यू रॉ मटेरियल सपोर्ट, टैक्सेशन की सपोर्ट देंगे, सब्सिडीज देंगे, मैन पावर दे देंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं फॉर एवरी इंडस्ट्री टू ग्रो, लाइक दे नीड अ फंड्स, they need a raw material, they need a logistic support, they need a manpower support, they need a lots of subsidies related to, you can say, power, water and all. So we are there to help you to grow your business. So I have lots of things to share with you, but I think we will discuss case to case basis. So I am requesting you all, if you have any queries, so please feel free to connect with me. Thank you so much. Investing in local manufacturing, we ultimately seek to replace. As you mentioned, there are a lot of opportunities in Africa. As you mentioned, there are a lot of opportunities in Africa on various sectors. Yes. My question is specific to infrastructure. Is it possible to know what are the infrastructure opportunity and how to tap them from government directly from African countries? See, frankly, मैं आपको एक चीजें क्लियर कर देता हूँ। अफ्रीका लोगों को लगता है, अभी मैंने काफी लोगों को अफ्रीका बोला होगा तो उनको लगा होगा कि साउथ अफ्रीका, तो अफ्रीका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल है। I'm talking of all 55 countries. हाँ मैं बताता हूँ, 50 आपको तो पता है इसलिए आपने क्वेश्चन पूछा, बाकी लोगों को पता नहीं है। अफ्रीका मोर देन 56 कंट्रीज है, जैसे पर इंडिया से बड़ा नहीं है, वहां का पॉपुलेशन यहाँ का पॉपुलेशन सेम है, बट इंडिया वी आर टुगेदर बिकॉज ऑफ दैट थिंग। आज मैं मुंबई से नागपुर आया हूँ, पर अब कितना किलोमीटर, हार्डली 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, बट वहां पे टोगो बेनिन 2 डिफरेंट कंट्रीज है, उनका अगर आप बाय रोड देखोगे ना तो सिर्फ 150-200 किलोमीटर है। तो दे हैव, अफ्रीका इज मीन्स नॉट ओनली साउथ अफ्रीका, देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ छोटे छोटे रीजन में उन्होंने अपने अपने कंट्रीज बना के रख ली है। अभी आप बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में 20 साल पहले अफ्रीका गवर्नमेंट ने कम टू नो कि दे हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, बट उनके पास पैसा था नहीं, तो दे अप्रोच लॉट्स ऑफ प्राइवेट फाइनेंसर्स। सो उसमें से काफी सारे प्राइवेट फाइनेंसर्स मिलके जॉइंट वेंचर्स, गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर करके अराइज कंपनी फॉर्म की। तो वहाँ के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोड से लेके, पोर्ट से लेके, एयरलाइन से लेके, एवरीथिंग विच इज हेल्प टू ग्रो देयर इकोनॉमी, वो दिस इज टेकिंग केयर बाय अराइज।
अगर आपको उसके रिलेटेड कुछ काम होगा तो वी हैव लाइक एवरी कंट्रीज वी हैव क्लस्टर्स, वी हैव अ पार्क मिनिमम, हमारा एक पार्क है 200 एकड़ का, 200 से 300 एकड़ का, तो आई कैन कनेक्ट विद क्लस्टर हेड्स. एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज. सर अभी मैं अगर इंडिया की बात करूँ ना, ऑल इंडियन इंडस्ट्री दे आर फोकसिंग एक्सपोर्ट ओनली ऑन यूएस एंड यूरोप. यूएस सो हो गया, यूरोप सो हो गया, तो हम भी सो गए. हम तो ऐसे बोलते हैं यार रिसेशन आ गया, बट अफ्रीका इज अनटैप मार्केट. अब G20 में भी काफी अफ्रीकन गवर्नमेंट के बाद टाइप हुआ है. पीयूष रिस्पेक्टेड मिस्टर पीयूष गोयल जी ने भी बोला है कि वी विल हैव टू डील विद अफ्रीका एंड ऑल. ये अनटैप मार्केट है. आप बिलीव नहीं करोगे, अफ्रीका में तो एवरी मंथ जाते रहता हूँ, वहां काफी सारे इंडियंस बैठे हुए हैं, स्पेशली महाराष्ट्रियंस, जिनकी सोने की खान है, और वो भी 100-200 किलो नहीं, खान है, पहाड़ के पहाड़ है, दे आर लीडिंग दैट. आप बड़े बड़े अगर कोई मॉल्स देख लिए आपने वहां पे, या होटल्स देख लिए, रेस्टोरेंट्स देख लिए, ओनर इंडियंस है, काम वहां के लोग करे लोकलाइज. एंड अगर आप फ्यूचर देख रहे हो, तो अगर आप अभी आपने टैप नहीं किया ना अफ्रीका, तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी नाउ रशिया, ईरान, यूएस, यूरोप सबको पता चल गया है. टोगो जो है ना, दिस इज द मेन पोर्ट, जहां से, जैसे आपको एग्जांपल बता देता हूं, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, हमारा पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन कहां से चला? कोलकाता से. व्हाई? बिकॉज वी हैव नियरेस्ट पोर्ट. अफ्रीका में टोगो डीप पोर्ट है, जो पूरी कंट्रीज को ये करता है, कनेक्ट करता है. अभी लोगों को पता चल रहा है. और कैसे कोई भी कंट्री में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे, अपॉर्चुनिटी जब जो पहला गया उसने पहले बाजी मार ली. बाद में लोग तो ट्रेडिशनल बिजनेस करते रहते हैं. जैसे आप ट्रेडिशनल बिजनेस में उतर गए, ये भी वड़ा पाव बना रहा, आप भी वड़ा पाव बना रहे हो, क्या हो गया? मार्जिन खत्म हो गई. तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस आने के लिए अभी और 10 साल जाएंगे अफ्रीका में. द लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज लोगों को पता नहीं है. तो इसीलिए मैं यहाँ कुछ बेचने आया नहीं हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कि आपका फ्यूचर कहाँ पे है, आपकी ग्रोथ कहाँ पे है. इंडिया में अगर आप बैठ के अगर बिजनेस करोगे ना, तो 10 साल लगते हैं ब्रेक इवन पे आने के लिए. आपको तो लगा होगा, आपको या 3 साल में. और वी हैव सक्सेसफुल स्टोरीज. हवा में बात नहीं कर रहा हूँ. मेरे साथ आइए, जो गैबोन में मोर देन 100 कंपनीज है ना, जिन्होंने 3 साल में ब्रेक इवन करके, जैसे एज एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम टेक्सटाइल, तो मुझे सिर्फ कपड़े के बारे में मालूम है, तो मैं बोलूंगा भाई बस मुझे भाई टेक्सटाइल का नॉलेज है, तो मुझे पता है कौन सा धंधा करना है, कौन सा नहीं करना है. तो जैसे लोगों, टिम्बर वाले जो बंदे जो फर्नीचर मैन्युफैक्चर, उन्होंने गेबॉन में चालू किया, 3 साल में ब्रेक इवन होने के पैसा इतना बना है. अब वो बोल रहे मैं फार्मा भी करूंगा, मैं एग्रो भी करूंगा. तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है वहां पे. एंड गवर्नमेंट का भी काफी सपोर्ट है. कुछ ज्यादा लूप्स होल्स नहीं है, आपको कस्टम ड्यूटी नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, टैक्सेस नहीं, और क्या चाहिए, पूरा तो सेविंग ही हो गया. तो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी. मैं यहाँ पे हूँ, और आपको कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन होगा, प्लीज आस्क. थैंक यू सो मच. And I invite Rajesh Kapoorji, AVP Head Metals and Composites, Tata Advanced System Private Limited. And now आज मेरे ख्याल से टाटा का नाम तो वैसे भी बड़ा है, टाटा ग्रुप बहुत बड़ा है. एंड टाटा के 3 कंपनी आज यहाँ पे है. टाटा पावर है, टाटा AI इंश्योरेंस है, एंड टाटा एडवांस टेक्नोलॉजी. सो आई रिक्वेस्ट कपूर साहब टू टेक दिस एंटरप्रेन्योर्स, इंजीनियर्स टू द नेक्स्ट लेवल. समथिंग टेक्निकल कुछ हो जाए. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. Thank you. So good afternoon, all of you. So I was a bit hesitant when I was talking to Mr. Mahesh that is this right forum, because I have nothing to offer you. Just I thought in coming to you and sharing the knowledge and the experience of what we do in the aerospace industry. So I belong to the Tata aerospace industry. You yesterday might have heard one news: C291 aircraft, which is from Spain, has been delivered. So we are proudly making that in India. This is the first aircraft company in India who is making the aircraft.
So we have 6, 7 plants, one in Nagpur, one in Bangalore, and 6 plants in Hyderabad. So I come from that community. My topic I've chosen for the advanced technology. So what is happening in engineering? How digital things are making things in engineering industry easy. So let's enjoy whatever we have experienced. So what is the productivity? I think everybody in sitting in this room knows that the lesser input and better output always termed as a better productive. From where, what are the key driver which influences, which drives the productivity in any industry? Essentially, you have to have the good quality. If you have good quality product, you need not to look back redoing the things. So your productivity enhances. Keep doing some small innovations. If any industry, lot of scope of innovation, irrespective it is engineering or pharma or textile, small innovation make you better productive each day. Keep doing something. Try making the better efficiency processes. Generally, in most of the industry, there is a myth. The few managers will sit together and they will decide how future should be, what best thing can be done. We always lose out taking the advantage of the brain which the operator has. So unless in any journey you involve them to take certain ideas how your product, how your process can be better and better can be made, that brings a better efficiency that has been experienced in many industries. Uh, Now I'm saying what is the quality productivity you make? It is again confined to hardcore engineering manufacturing industries. These are the basic instrument in any industry does micrometer, vernier, CMM to the large extent. But what new has come in the market are AI-based solution, laser tracker, Blu-ray scanner, and the virtual reality. All this has helped industry minimizing their time of inspection the product, high repeatability, high dependency. For example, we can take Blu-ray scanner. This instrument helps measuring your component made of metal, non-metal, and brings down your inspection time to 50%. Taking an example, in aerospace industry, we make a component, say like 1 meter component. For normal inspection method, it has been taking minimum 1 hour. By this instrument, it just takes 30 minutes and there's no dependency on the manual. So without manpower, you can just put your component, it senses the all periphery, all features and gives you the report. And the report also brings immediately, you can catch on the report what are the elements which are going out of specs. So these technology can be adopted by the SME, which brings your inspection cost lower and lower. The last one, AI-based inspection, where you have the high repeated product, a single component, if you make 1,000 in a month, that helps immediate inspection. It just takes 30 seconds, maximum 1 minute of inspection. So we produce close to say 5,000 components, similar component in a month, which earlier was taking something this problem. So which was earlier taking hours to check, which is now happening in few seconds. SME can adopt these kind of the technologies. There are some software-based solutions are available in the market. Quoting a few of the example, like you get 2D model, 3D model drawings with you. What feature you have to check? That ballooning software, again, the 10-hour job can be done in 1 minute. That has been adopted in many industries. So if you have an opportunity, please go and check. There's another, the digital tool available. So that gives an added advantage on digital tool. If you measure anything, manually you need not to report in your inspection report. Automatically that measurement gets transferred into the inspection report, so that avoids any manual error. This is a live example what we have done. And now coming to the manufacturing productivity, how any industry can enhance. So there are many tools available, considering the SME into the center.
thought of sharing, we can adopt some TPM principles where you can, that has the 8 pillars, but not for all paid. It's a costly thing and it's a long lengthy thing. It goes for 3 to 5 years horizon. We can adopt 1 or 2 pillars from there and industry can benefit. In upcoming slide I can share you. There is a gated process approach. Again, what I shared, that keeping operators in the forum where they can give the better ideas for improvement, that can be thought of. Condition-based monitoring, again a challenge in small scale industries where you take up a machine and regular maintenance become a challenge for you. So how you can, with this small thing, can keep your machine all the time in good condition for better production. And the last, again, various software available which helps industry to become a more productive. As I spoke, TPM journey, it is a 8 pillars, but for SME, you can adopt one of the pillars which is called autonomous maintenance. What it tells about is my machine, I maintain. It's not that you have a separate maintenance department, and if the machine goes out of order, somebody else has to come and tell. It is something like all of us, we are having the 2-wheeler or 4-wheeler. We maintain ourselves. It is not that somebody comes, unless until it goes for a major breakdown. You go and hire to any workshop. So this kind of the concept can be easily adopted. And there are some small visual aids, lubricant, vibrations, that and temperature of the machine can be sensed very easily, wherein you can maintain your machine well. This is again a gated process, the structured approach for any improvement that if you adopt it, if somebody wants the help on that, Tata team will be always be there to help them, the small scale industries, to see how this process helps. So generally this we call as a top process with well developed across Tata group of companies. This has 7 steps wherein any problem or any critical issue in industry, it could be any problem. It is not that the only productivity or quality. It could be the financing, it could be your documentation, it could be dealing with your customer. That helps improving your efficiency by minimum 40%. That's kind of the advantage you can get from this process. As I said, the machine comes with the many sensors. It's called condition-based monitoring. Even if you have the older machine where the sensors are not available, the market is open, you can buy certain sensor, put into the algorithm that helps you making your machine running all the time, and it always gives a pre-alarm before going to the breakdown. So it is better you cure immediately rather than having a major breakdown. This will be my last slide. Various kind of the software available. Hardcore machining industry where we run the machine with the 30,000 RPM. Those gone where the 6,000, 8,000 was the highest RPM machine available. Today it is 5 times high productive machines are available, which comes at a very high cost, 20 crore, 10 crore, 15 crores or something. If you adopt certain software that helps, one of the software is called VeriCut. It helps mentioning the right path, how the tool should move on machining of the component, and also helps predicting well ahead of the time if your software on which you are running your component is safe or not. Is this tool may go and hit any portion of the machine or not. And also optimizes, beside optimizing its path, is ensures optimal utilization of the machine. There are various software available. The costliest portion of the machine is the spindle. Is in 5 crore machine, the spindle comes to close to 80 lakhs or 70 lakhs. How best you can utilize your spindle? It should not be overloaded. It should not be underloaded also. If you are underloaded, your productivity will be compromised. So their softwares are available. If you can use it, you can always better productivity. The last one is the called adaptive control mechanism. So in any machine, you run various variety of the component. Once you fix a program, it helps optimizing that program. Wherever the depth of cut increases, it adjusted the feed and the speed, so you always get the best in output. So I'm not sure
is this the good enough forum for all this? But if I'm happy to share and extend the help from the Tata Group, any small scale industry, particularly engineering industry, they wanted some help in terms of the technology understanding, we are there. Thank you very much. थैंक यू कपूर सर, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा सवाल सर आपके लिए था मेरा। See, when we are going into the traditional manufacturing, and now we are moving ahead with the industry 4.0 and industry 5.0, some digitalization things are happening there. So on an average अगर आप देखोगे तो productivity में और quality में कितना फर्क पड़ता है? Digitization, again, it depends what kind of you're doing it, but broadly 7 to 8% you always bring it. 7 to 8% straightforward you can get it. Straightforward. Again, depends on how complex business you are. It's more complex where you have too much of the database company. There it may goes up to 15 to 16% because manual error sometimes costs heavily. And aircraft industry, we cannot compromise anything. One single mistake, on average 250 lives are there on the air. So that helps in a lot. थैंक यू सर, एंड थैंक यू वेरी मच। सो सभी इंजीनियर्स के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए आपके। एंड विल नीड योर सपोर्ट सर। वी हैव डूइंग वन कंसेप्ट एसएमई बिजनेस फोरम करके, जो हमने कभी कंसेप्ट चालू किया हुआ है कि वी कॉल द थॉट लीडर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड सम इंडस्ट्रीज, जैसे कि अपने मैन्युफैक्चरिंग का, तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का कोई इंडस्ट्री है तो वी कैन हैव यू एज एन थॉट लीडर देयर एंड वी कैन कॉल सम सॉर्ट ऑफ 40-50 30-40-50 जो इंडस्ट्रीज है मैन्युफैक्चरिंग के। सो वो एक कंसेप्ट हम चालू किया हुआ है। सो सुन आई विल बी गेट इन टच विद यू and our viewers support can always be there if they want a workshop, they want a training of the people, the gated process what I told, or any other help. Yeah, we'll be happy to. Thank you sir, thank you very much, and it will be very useful for the SME sector. Now I will invite Mr. SS Mudamwar. He is a GM District Industry Center from the Nagpur, and he is talking about the schemes and initiatives for manufacturers and exporters from the state government. Good afternoon. I am Shivkumar Mudamwar from DIC. DIC is the representative of industry department at the district level. Now my session is on about what are the incentives for manufacturers. Now Maharashtra government is implementing various schemes for the promotion of industry and investment employment. Now one of the scheme which is very useful for the industries, MSMEs, large scale, mega industries, that is package scheme of incentives. Now package scheme of incentives is introduced for the industrial policy period of 1st April 2019 to 31st March 2024, or the next new scheme comes into the force. This scheme will be continued. What is the objective? Objective is for the dispersal of industries to lesser developed areas, because we know that Pune, Mumbai, Nashik, Aurangabad, majorly industries are concentrating their investments to restricting their investment to that area only. But we have to disperse this industrial investment, because we have sustainable and equitable development of all the regions of Maharashtra, which is more important. And second is additional employment, because whatever employment is generating, that is every ज़्यादा, अभी हिंदी में बात कर सकता हो क्या? हाँ ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, पुणे, मुंबई, और यहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती है। तो उसके रिगार्डिंग ये 1964 से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंसेंटिव स्कीम
सब लोगों के लिए सब इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए इम्प्लीमेंट करती है। ना इसमें कौन कौन से कवरेज आते हैं, यानी कौन कौन से टाइप की इंडस्ट्रीज कवर होती है, यानी प्रोप्राइटरशिप वाले, पार्टनरशिप, प्राइवेट सेक्टर, स्टेट पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, ये सारे लोग, कोऑपरेटिव सेक्टर भी इसमें क्वालिफाई होते हैं। और एलिजिबल इंडस्ट्रीज जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच आर अंडर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द आईडीआर एक्ट 1951 और MSMED एक्ट 2006 और ITBT मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स and mechanized food or agro-processing industries in the following sector. There is dairy, fruit, grain processing, non-alcoholic beverages, and packed foods. These are the industries which will get the incentives under this scheme. अब अभी जो महाराष्ट्र स्टेट है वो बहुत बड़ा स्टेट है, तो उसमें अभी डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमने एक 8 to 9 टाइप्स ऑफ तालुकाज में इसको डिवाइड किया है। तो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी, डी प्लस, नो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, नक्सल अफेक्टेड, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ऐसे कैटेगराइजेशन किया है। जो ए बोले तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरियाज है, वहां पे इंसेंटिव्स लगभग नहीं के जैसे ही है, और सबसे ज्यादा इंसेंटिव्स रहेंगे नो इंडस्ट्री, नक्सल अफेक्टेड, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो हमारा लगभग मराठवाड़ा और विदर्भ जो एरिया है वो टोटल एरिया डी प्लस और एस्पिरेशनल और नक्सल अफेक्टेड एरिया में ही आता है, इसलिए मैक्सिमम इंसेंटिव्स विदर्भ मराठवाड़ा के लिए है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने के लिए। अभी इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अभी नया MSMED जो डेफिनेशन MSME के चेंजेस हुए हैं, तो उसमें अभी लगभग 1 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट एंड 5 करोड़ टर्नओवर, तो माइक्रो है। 5 करोड़ 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और 50 करोड़ टर्नओवर, तो स्मॉल में आएगा। और 50 करोड़ से इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड 250 करोड़ टर्नओवर, दे विल कम इनटू द मीडियम कैटेगरी। बट ये जो स्कीम है वो सिर्फ अभी MSME के एक्ट के 2006 में जो ये था, उसमें जो ये किया था, कैटेगराइजेशन किया था माइक्रो स्मॉल मीडियम का, उसके हिसाब से इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो माइक्रो यानी अप टू 25 lakhs इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, स्मॉल 25 lakhs to 5 crore, and medium 5 crore to 10 crore, or large industries which are exceeding 100 crores in Vidarbha region, and minimum 300 persons should be employed, and special LSI means that is which is 50, क्योंकि MSME के बेनिफिट अभी 50 करोड़ तक जो है 2019 पॉलिसी में, वो MSME के बेनिफिट 10 करोड़ तक हमने यहाँ पे बोला है प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट, लेकिन 10 करोड़ से 50 करोड़ तक भी उसका फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, तो भी उसको MSME के बेनिफिट ही मिलेंगे। तो इसके हिसाब से फिर जो बीच वाला जो है 50 से 100 करोड़ वाले कैटेगरी है वो स्पेशल LSI कैटेगरी है। और न्यू यूनिट्स और एक्सपेंशन यूनिट्स आर एलिजिबल इन दिस इंसेंटिव स्कीम। नाउ व्हाट आर दिस आर द MSME। अब A and B एरियाज के लिए लार्ज के डेफिनेशंस क्या है, 750 इन्वेस्टमेंट and 1000 employment, A, B, C, D, is different types of category of talukas have different types of investment। और मेगा इंडस्ट्रीज जो है, मेगा प्रोजेक्ट्स, अभी हम SME चैम्बर ऑफ इंडिया में आए हैं, तो यहाँ पे SME ज्यादा होंगे, तो ये मेगा और लार्ज के बारे में थोड़ा सा मैं कम बात करता हूँ। ये अभी कैटेगराइजेशन के बारे में डायरेक्टली जो इम्पोर्टेंट होता है सबके लिए इंसेंटिव्स इम्पोर्टेंट होते हैं, इंसेंटिव क्या मिलने वाले हैं और इन्वेस्टमेंट कितने होने के बाद हमें कितने मिलेंगे, उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेगा के लिए एक सिंपल है कि 1500 मिनिमम होना चाहिए, 2000 एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए A and B एरियाज के लिए, और हमारे विदर्भ मराठवाड़ा में 350 अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और 500। मेगा का इंपॉर्टेंस क्या है, मेगा में और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स में स्पेशल इंसेंटिव्स विल बी ग्रांटेड बाय द चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। That means special committee is there, they will be having the special incentives also, they can negotiate for mega and ultra mega only. Other than mega and ultra mega, all are the fixed incentives which are given in this policy. And ultra mega means 4,000 all over the state investment, and 4,000 is the employment criteria. And what are the existing unit which are because we are introducing policy for every 5 years, that means earlier this 2000 PSI, that is policy of industrial policy 2013 was there, which is up to 31st March of 2019.
तो 31 मार्च 2019 के बाद, ये 1 अप्रैल के बाद जो यूनिट सेटअप होंगे, अभी हर 5 साल के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, तो 1 अप्रैल 2019 के बाद जो यूनिट सेटअप होता है तो वो यूनिट एज ए न्यू यूनिट कहलाएगा। अगर उसने पहले कोई एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यानी वन ऑफ द प्रोसेस यानी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लिया होगा 19 से पहले, तो वो भी एज ए एग्जिस्टिंग यूनिट कंसिडर होगा। और न्यू यूनिट किसको कंसिडर करेंगे? जो अभी 1 अप्रैल 2019 के बाद जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जो न्यू यूनिट सेटअप कर रहा है। अगर पहले वाला भी जो सेटअप यूनिट है और वो यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा है लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 19 के बाद ही होगा, तो वो इस पॉलिसी में कंसिडर होगा इंसेंटिव्स के लिए। और इफेक्टिव स्टेप्स मिनिमम ये जो है अभी न्यू इफेक्टिव स्टेप्स एक होना चाहिए 1 अप्रैल 19 के मिनिमम। वन ऑफ द इफेक्टिव स्टेप्स शुड बी देयर आफ्टर 1 अप्रैल 2019, दैट इज फिजिकल पोजीशन ऑफ द लैंड। अगर एमआईडीसी में लैंड है तो एग्रीमेंट टू लीज होना ही चाहिए, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इफेक्टिव पोजीशन ऑफ द लैंड। अगर अदर देन एमआईडीसी एरियाज है तो वहां पे भी सेल डीड या लीज डीड जो भी है वो रजिस्टर्ड जहां जब से होगा लैंड वही कंसिडर होगा कि कब से फिजिकल पोजीशन है। वैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी कंपनी ट्रस्ट जो भी है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और आईटीबीटी यूनिट्स के लिए लेटर ऑफ इंटेंट होना चाहिए, एमएसएमई यूनिट्स के लिए कंसेंट टू एस्टेब्लिश होना चाहिए, और लार्ज और मेगा इंडस्ट्री है तो उसका आईएम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो वन ऑफ द इफेक्टिव स्टेप शुड बी देयर आफ्टर 1 अप्रैल 2019। अब एप्लीकेशन फॉर एलिजिबिलिटी, जो भी 31/3/24 से पहले इन्वेस्ट में एप्लीकेशन करता है डीआईसी या जो भी कंसर्न इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, डीआईसी है, जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस है या डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र है, तो वो उनको 31 मार्च 2024 से पहले मिनिमम इफेक्टिव स्टेप्स के डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन करना होगा, तो ही इस पॉलिसी में उनको इंसेंटिव के लिए वो पात्र रहेंगे। तो बाद में 1 अप्रैल 19 के बाद अगर किसी ने पहले 1 अप्रैल 19 से पहले भी एप्लीकेशन नहीं किया है, 1 अप्रैल 19 के बाद किया है और उसका इन्वेस्टमेंट पहले 1 अप्रैल 19 से पहले है, तो उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेंगे। अब एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या पकड़ा है, क्या ये जाएगा काउंट होगा, तो उसमें फिक्स कैपिटल में लैंड, सेकंड इज द साइट डेवलपमेंट and building cost, whichever construction you are paying for the building, plant and machinery, that is a machinery cost whichever is there without GST, because GST is credited for the industry, and expenses capitalized on technical know-how amount paid to MSc DCL, MIDC, interest paid before the production। और R&D यूनिट्स के एलिजिबल इंडस्ट्री यूनिट्स है तो उसका 25% ऑफ द फिक्स कैपिटल यूनिट अप टू द मैक्सिमम 100 करोड़ फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज दैट कैन बी कंसिडर। और अगर रॉयल्टी भी, अगर टेक्नोलॉजी नो हाउ कहाँ से हम ये करते हैं तो उसका भी 10% फिक्स कैपिटल के लिमिट में उसको भी ये पकड़ा जा सकता है अपने फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में एलिजिबिलिटी में। तो और कोल्ड स्टोरेज 2013 के स्कीम में कोल्ड स्टोरेज को एक स्पेशल अलग से इंसेंटिव पूरे दिए जाते थे, लेकिन अभी कोल्ड स्टोरेज विच इज इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दैट कैन ओनली बी कंसिडर्ड फॉर द इंसेंटिव्स। और ओनली न्यू फिक्स्ड एसेट्स विच आर टेकन अप्रेज्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कैन बी कंसिडर्ड। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अप्रेजल चाहिए एमएसएमई के लिए। अगर कोई एनबीएफसी से अगर लोन लेता है, जो बैंक देती है लोन, उनसे ही बैंक फाइनेंस फाइनेंशियल अप्रेजल करा सकते हैं यूनिट्स इंडस्ट्री वाले। नहीं तो अगर एनबीएफसी से बाहर से कहीं लोन लिया है तो उसको सीकॉम के थ्रू अपना प्रोजेक्ट अप्रेजल कराना होगा। तो बाकी इंटेंजिबल एसेट में कितना मैक्सिमम, मैंने जो भी इंटेंजिबल एसेट हो, बाकी कोई भी अदर एसेट्स हो, तो 10% ऑफ द फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा नहीं, इसमें टोटल फिक्स कैपिटल में नहीं पकड़ा जा सकता। अब इन्वेस्टमेंट पीरियड यानी अभी 5 साल का तो पॉलिसी पीरियड है, 5 साल का। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई इंडस्ट्री शुरू करती है तो क्या 1 साल या 2-6 महीने में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, तो उसका जो भी है एमएसएमई के लिए 3 साल इन्वेस्टमेंट पीरियड है, लार्ज स्केल के लिए 4 साल है और मेगा के लिए 5 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड है। अभी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स विच इज मोर इम्पोर्टेंट।
न्यू एमएसएमई यूनिट्स जो ए कैटेगरी में है उनको कोई भी इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते हैं। ए कैटेगरी दैट इज पुणे, ठाणे, रायगढ़, Mumbai, these type of areas will not get any incentives for the MSMEs. B type of areas will have 30% of their fixed capital investment and for the period of 7 years. डी प्लस, अभी हम विदर्भा में है तो विदर्भा की थोड़ा ज़्यादा बात करते हैं, तो विदर्भा के लिए हमें 80% ऑफ द फिक्स कैपिटल जो भी है वो फिक्स कैपिटल के 80% आपको सब्सिडी आपको ग्रांट होगी। तो उसमें भी वो 10 साल के एक 10 साल में आपको मिलेगी, लेकिन हर साल उसका एनुअल कैप रहेगा कि विद इन द परसेंट every year it will not exceed up to the more than the 10% of their qualified incentive. तो लार्ज के लिए भी विदर्भा के लिए 80% है फॉर द पीरियड ऑफ 9 years। अब ये इंसेंटिव जो है और एक्सपेंशन के लिए भी इंसेंटिव्स एक्सपेंशन रेट्स के लिए भी मिलेंगे, उसका जो भी 80% है उस 80% की 80%, दैट मीन्स 64%। Expansion units also get the incentives for their investment whichever that has been done in the 3 years, at 64% तक उनको इंसेंटिव मिल सकते हैं उनके लिए। और एक जो फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग है, टेक्नोलॉजी अभी जो बोला 4.0 इंडस्ट्रीज है, तो अभी उनके लिए भी अप टू 20% whatever we are getting the incentives, उसके एक्सेस में 20% इंसेंटिव फिर से उन इंडस्ट्री एग्रो प्रोसेसिंग और बाकी टेक्नोलॉजी 4.0 इंडस्ट्रीज को भी मिलेंगे। तो 80% अगर हम विदर्भा में काउंट करते हैं 80%, तो हमें 100% मिल सकते हैं एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। और बाकी गढ़चिरौली, चंद्रपुर का कुछ नक्सल अफेक्टेड एरियाज है, वहाँ पे तो 100% ऑलरेडी वहाँ पे इंसेंटिव्स मिलता है। अभी एक किस प्रकार में, अभी इंसेंटिव ग्रांट होने के बाद 80% है, 100% है, 64% है, तो इंसेंटिव वापस आपको कैसे मिलेंगे? तो रियम्बर्समेंट बेसिस पे आपको इंसेंटिव वापस मिलेंगे। जैसे कि आपने इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, दैट इज एसजीएसटी, आपने एक साल में जो भी पे किया है उसका 100% ग्रॉस एसजीएसटी आपको वापस एमएसएमई के लिए मिलेगा। एलएसआई यूनिट्स ग्रॉस, दैट इज नॉट द नेट, एंड एलएसआई यूनिट्स के लिए 50% ऑफ द ग्रॉस एसजीएसटी, स्पेशल एलएसआई यूनिट्स के लिए 40% ऑफ द नेट एसजीएसटी, एंड these are the एसजीएसटी कंपोनेंट। और उसके बाद जो है एडिशनल इंसेंटिव्स, इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा आपको, जब तक आपने जो भी इंटरेस्ट लिया उसका 5% इंटरेस्ट आपको रियम्बर्स किया जाएगा। आपको पहले पे करना है, उसके बाद 1 साल के बाद आपको क्लेम करना है डीआईसी को, जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसको, फिर वो आपको रियम्बर्स हो जाएगा। और पावर टैरिफ सब्सिडी है, पावर टैरिफ सब्सिडी है 1 रुपए पर यूनिट, वो है 3 साल के लिए, पहले 3 साल के लिए, वो सिर्फ न्यू यूनिट्स के लिए। इंटरेस्ट ऑफ पावर टैरिफ सब्सिडी ये न्यू यूनिट्स के लिए, एक्सपेंशन यूनिट्स के लिए नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन भी जो है विदर्भ में अप टू द पीरियड ऑफ जो भी 10 साल का आपका एसी पीरियड है, वो 10 साल के लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन रहेगा। उसके बाद एक्सपेंशन और स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन एट द टाइम ऑफ परचेसिंग द लैंड, और लीज डीड के लिए जो लैंड परचेस करने स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है, या मॉर्गेज के लिए स्टैम्प ड्यूटी जो पे करना पड़ता है, उसके लिए भी आपको एग्जेम्पशन इस पॉलिसी में मिलेगा। और आईटीबीटी यूनिट्स और उनको भी मिलेगा, आईटीबीटी यूनिट्स का 100%, वो एरिया के हिसाब से 75% अगर पब्लिक पार्क में है या प्राइवेट पार्क में है। अभी ईयरली कैप ऑफ इंसेंटिव जो बताया था मैंने कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स में जो पर ईयर कैप है वो उसका 10% से ऊपर नहीं जाएगा हर ईयर में। और इसके हाई पावर कमेटी मेगा और अल्ट्रा मेगा के लिए जो हाई पावर कमेटी है वो डिसीजन लेती है कि इंसेंटिव्स क्या देना है। और उसके बाद other than these incentives for the MSME especially and only for expansion units, these are given for the strengthening of MSME, that is 5% subsidy on additional capital
इक्विपमेंट एक्वायर्ड फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, और 75% क्वालिटी सर्टिफिकेशन सब्सिडी, जो भी एक्सपेंसेस हुआ है उसका 1 लाख रुपए अप टू द लिमिट ऑफ 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और इसके लिए क्लीनर प्रोडक्शन के कुछ मेजर्स लिए होंगे तो उसके भी 25% ऑफ द सब्सिडी वाट एवर यू हैव incurred the expenses up to the limit of 5 lakh, 75% of the subsidy for national patent है तो 10 लाख तक मिलेगा, इंटरनेशनल पेटेंट है तो आपको 20 लाख तक वापस मिलेगा। और 75% को वाटर ऑडिट, एनर्जी ऑडिट और कंजर्वेशन ऑफ रिसाइकल वाटर, ये सारे इसके लिए भी इंसेंटिव सिर्फ एमएसएमई के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर एमएसएमई ये इंसेंटिव मिलेंगे। और क्रेडिट रेटिंग के लिए है अप टू 40,000, और पहले फर्स्ट 250 SMEs which are going to enlisted on the SME stock exchange, they will be given back their expenses whatever up to the 6 lakh rupees from the government of Maharashtra under this policy। मॉनिटरिंग और रिव्यू जो है उसके लिए अभी हर साल आपको फिर जो भी आप रिटर्न्स वगैरह देना है, क्योंकि ऑपरेटिव पीरियड अभी 10 साल के लिए इंसेंटिव दिया है, उसके बाद आपको मिनिमम 5 साल एडिशनल आपको चलाना है यूनिट, इंडस्ट्री यूनिट, तो आपको ये इंसेंटिव मॉनिटर हर साल के लिए, फिर आपके रिटर्न्स वगैरह आएंगे, जो भी आपका इनकम टैक्स, एनुअल प्रोडक्शन रिपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, दीज आर द रेगुलर मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी, पावर टैरिफ सब्सिडी, हाँ ये अगर इसमें अभी एडिशनल ये भी है, अगर स्पेशल वुमेन पॉलिसी भी थी अभी तक, उसका अभी रिवीजन नहीं हुआ है, तो 20 दिसंबर 2022 को ख़त्म हो गया वो पॉलिसी। नहीं तो उसमें अगर वुमेन 100% ओनरशिप है और अप टू 51% एम्प्लॉयमेंट है तो उनके लिए भी कैपिटल सब्सिडी थी अप टू 25% एंड 50 lakhs टू द सीलिंग ऑफ 50 lakhs फॉर आवर विदर्भा रीजन। आ सकता है ना, अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट का एज एक्सपांशन रेट ट्रीट होकर आपको 64% मिलेगा। Any other question? कोई टाइमलाइन, यानी टाइमलाइन है क्या? हाँ कौन से स्कीम में? पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स आपका सैंक्शन हो गया था, एलिजिबिलिटी पीरियड लिया है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लिया है क्या आपने? एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लिया है, और डेटा प्रोडक्शन क्या था? ठीक है ये फर्स्ट ये 1 to 1 है तो आपका खुद ये अकेले का प्रॉब्लम है तो आप मुझे बाद में बात कीजिए, हम डिस्कस करेंगे। Sir, we can take this offline, I think so. That will be better because we have. अगर इंडिविजुअल है तो, अगर हाँ बड़ा कोई यानी एस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन है तो कौन से टाइम लिमिट के लिए बोल रहे हो? सैंक्शन होने के बाद गवर्नमेंट का फंड जैसे अवेलेबल रहेगा उसके हिसाब से आपको वापस आएंगे पैसे, लेकिन अभी जो डिले पीरियड है जो डिसबर्समेंट का, अभी मार्च 2023 तक के सारे इंसेंटिव्स डिसबर्स हो चुके हैं। मार्च 2023 तक के सारे इंसेंटिव्स डिसबर्स हो चुके हैं। हाँ ठीक है ना, वही बोल रहा हूँ ना, आपका क्या प्रॉब्लम है पर्सनली हो सकता है। कोई कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुआ है, दे आर इनटू सम ए प्रोडक्ट, और अभी 2023
2023 में वो ए प्रोडक्ट को पूरा स्क्रैप करके दे वांटेड टू स्विच ऑन द बी प्रोडक्ट। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग भी डिफरेंट है, पूरा टोटल सेटअप डिफरेंट आता है, प्लांट एंड मशीनरीज विल बी चेंज, सो इट विल बी ट्रीटेड एज ए एक्सपेंशन और इट विल बी ट्रीटेड एज ए न्यू बिल्डिंग। आप टोटल वो पहले का पूरा स्क्रैप करने वाला है, पूरा मशीनरी स्क्रैप हो जाएगा, पूरा प्रोडक्ट लाइन प्रोडक्ट लाइन पूरा चेंज हो जाएगा। और पहले कुछ इंसेंटिव लिया है क्या 2013 में? नहीं कुछ नहीं लिया है ना, ठीक है ना। अगर वहां पे अगर लैंड, लेकिन वन ऑफ द इफेक्टिव स्टेप्स ने आपने देखा है ना, वन ऑफ द इफेक्टिव स्टेप्स मस्ट बी इन द पॉलिसी पीरियड, that is consent to establish land, corporation of your see date of incorporation is 2013 date of incorporation, कंपनी का नाम भी वही है, उसी नाम से कंपनी के पास में रजिस्टर्ड लैंड, वही लैंड पुरानी लैंड है, वही लैंड और वही शेड, ठीक है। only thing is that the product line and the process line, manufacturing line will change, manufacturing machineries will be changed, so it will be treated as expansion, एक्सपेंशन में आएगा। बट नया प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी होता है ना एक्सपेंशन में, डाइवर्सिफिकेशन मींस इट, हां डाइवर्सिफिकेशन ही है, डाइवर्सिफिकेशन विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंशन ओनली। अच्छा, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. If you have any other questions, you can get in touch with him directly. One more thing, we have the copies of the presentation with us for all the speakers, and with their permission, we can give it to you also, share with you also. So whoever require additional information, they can get in touch with us. We have 3 more speakers. So मुझे लगता है कि कुछ सर के ऊपर से नहीं जा रहा है किसी के. All are hungry for the knowledge. Yeah. शॉर्ट एंड स्वीट में मैं सबको कहूँगा कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी टाइम देख के खत्म करें। आई विल इनवाइट मिस्टर राव, DGM, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस नागपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टू टॉक अबाउट द SBI's product. Over to you, sir. Yeah, good afternoon all. So at the outset, I would like to thank Chandrakant Salunke ji and Mahesh Salunke ji for bringing together all the stakeholders of the SME ecosystem on one platform. Apart from entrepreneurs, financiers, government authorities, everybody is here. This listening point is very vital for the growth of a MSME sector. Chandrakant ji बोल रहे थे कि State Bank of India has never rejected. We don't go back on any proposal, but the thing is, people don't know that we have so many products, so many services, and the perception is different from the actual. Somebody was telling in the morning, he was telling, sorry, I don't know your name. He has a very good experience with State Bank of India. So, first of all, my request is, come, experience us, then form the impression. So, having said that, State Bank of India needs no introduction. Am I audible now? So, SBI needs no introduction. With 47 crore unique customers, we can rightfully claim that we are the banker to every Indian. That is our tagline. We cater to every sector, every segment of the economy. Having said that, all sectors are important. While all sectors are equally important to us, SME is a little more important, I would say. Why? Because they are the growth engine for the country's GDP, country's economy. They are the second biggest employer of the country after agriculture, and they contribute to 31% of the GDP. So recognizing this, State Bank of India is one of the first banks to recognize that SME sector needs a preferred treatment. The customers need a preferential treatment. See, compared to car loan or personal loan, we need to understand the customers more deeply. We need to have a separate delivery system. So recognizing that need, we have formed a different delivery channels for SME customers. So first I will briefly explain about 2 minutes about the delivery channels, and then I will cover 3-4 products. See, up to 500 crores, we call them as corporates in our bank.
we have a dedicated branch setup, and up to 50 crores, that is between 50 to 500 crores, we call them as mid corporates. And we have a dedicated channels for them also, dedicated branches. In all tier 2, tier 3 and tier 1 cities, we have dedicated branches. Here in Nagpur also, we have one dedicated branches for those customers. But the actual MSMEs are the customers who are enjoying limits up to 50 crores. For them, we have segmented into three categories. Customers enjoying limits from 50 lakhs to 50 crores. We have dedicated branches for them in Nagpur city. In Maharashtra state, we have 45 such branches. In Vidarbha, we have 15 such branches. And in Nagpur city alone, we have 4 such branches located at MIDC Bitipuri, MIDC Hingna, Central Avenue Road, and Ravinagar. So all the branch managers are here with you. So please, you can after lunch or during lunch or after lunch, all the 4 branch heads are here. You can get in touch with them, or if you find time, you can drop into any of the branches. All these 4 branches are dedicated branches, specialized branches. There will not be much footfalls. You can sit with them and discuss with your needs. That is for those customers who require 50 lakhs to 50 crores. And up to 50 crores, we have what is called SME Credit Center. We have dedicated asset management teams in those branches. We have one at Mate Chowk in Nagpur city. So we cater up to 50 lakhs. So you can visit them also. And in the RUSU areas, semi-urban areas, we have what is called retail asset credit centers. We have 15 such centers in different places at Katol, at Bandara, at Gondia, etc., etc. So those who are operating from those centers, they can approach them. It is not that you need not approach any branch. You can go to any branch, take the details of these branches and visit them to get the personalized services. So this is about the delivery channel, because SME के लिए the personalized relationship is very important. That is why we have these dedicated setups. And now coming back to the products, I will tell you nowadays everything is digital. People don't want to come to the branches unless they have a specific requirement. So we are also moving digital. We are very advanced as far as digital channels are concerned. Some of you might have got the leads. Those customers who are having current account with us, filing GST returns as well as income tax returns, depending upon the transactions, volume of transactions in your accounts, you will automatically get business leads. You will be eligible for pre-approved loans. We call them as pre-approved business loans. Up to 20 lakhs, depending upon your turnover, your transactions in the account, as well as your credit history. We all collect the data from different servers like GST, income tax returns, as well as this bureau reports. And then we generate the leads. They are fully automated leads. You can download our Business app on your mobile phone, and in 4 or 5 clicks, you will be eligible for the loan. You can draw your limits. You need not visit any branch. Maybe for 1 page signature you need, and within 5 minutes you can download. That is our pre-approved business loan. And as Chandrakant ji told, most of you might not be aware, up to 5 crores you can avail collateral free loans. All that you need to pay is 1.67% CGT SME fee that goes to that fund. In case of default, we claim the amount from CGT SME. So up to 5 crores, most of the customers meet. 95% of the customers' credit requirements are up to 5 crores. Now, Government of India is encouraging, and our bank is also encouraging collateral-free loans, because maintaining collateral is also cumbersome for us. We need to take legal opinion, we need to take valuation report, we need to safe keep your documents. They will be subjected to audit every year. Auditor writes some comments, we need to respond to them. To avoid these things, we are offering collateral-free loans up to 5 crore limit. All you need is you have to pay 1.67% of CGT SME premium.
Any scheme up to 5 crores is eligible for CGT SME coverage. And after that, we have what is called contactless lending program. PSB loan in 55 minutes .com. There is a site. You can register there and you will become eligible for a digital loan. And after that, we have what is called EDFS, Electronic Dealer Finance Scheme and Vendor Finance Scheme. We have tie-ups with almost all industry majors, 330 to be precise industry majors, and two of them are here. Tata Solar Energy also one of the industry majors. Those who wants to avail limits, who are their dealers, they can avail leads loan through EDFS scheme. The details you can contact us, these 4 branches will give you the details. And after that, we have what is called cluster finance scheme. So we tie up with all state governments. In some places, some activities are famous. So we identify such clusters and extend special concessions, rebates to that particular activity undertaken in those clusters. For example, in Maharashtra, we have identified 6 clusters, 2 in Pune. Pune is for auto as well as pharmaceutical industries. And Kolhapur we have identified for foundry cluster because that activity is more there. And Ichalkaranji we have identified for power loom sector. As far as Vidarbha is concerned, we have identified this for rice mill clusters, particularly in the districts of Gondia, Chandrapur, Wardha and Buldana districts. We have identified them as cluster for rice milling activity and other food processing also. Anybody who is operating in food processing industry, they will be eligible for discounts in processing fees as well as interest rates also. We are extending concessions. So you can avail them. And another important product is Stand Up India. This is the flagship entrepreneurial development program of Government of India, particularly for entrepreneurs belonging to SC, ST and women category, setting up greenfield venture requiring finance from 10 lakhs to 1 crore. They will be eligible for finance under Stand Up India scheme. There also, we don't insist for any collateral. This is also a collateral free loan. You can avail this. And as Chandrakant ji told and our GM also told, green energy financing also we are very much active in that. We have tie-ups with 4 industry majors under Surya Shakti Solar Finance Scheme. Up to 1 megawatt captive power generation, up to 4 crores, we extend finance. We have tie-up with MOUs with Tata Power Solar Systems Limited, Very Engineers Limited, Mahindra Solarize Private Limited and Havels India Limited. If you are purchasing any captive power equipment up to 4 crores, up to 1 megawatt power generation with any of these suppliers, please insist for SBI finance. Here also we have concessions in this, and we are also encouraging biofuels. Particularly government is going for this mixing of ethanol and petrol. So ethanol biofuel generating units are coming in a large scale in VIDARBHA region. We have already financed 2 units. Of course, they are major units. So any suppliers to them also, mostly rice mill only, can be covered under this scheme. And those who don't want to give any, who don't fit into any of these schemes and who don't want to give their financials, they can take what is called asset backed loan. We call it as ABL Saral. So 65% of the value of security we straight away finance as your CC limits. You can use it as either CC limit or term loan limit. Hassle-free finance without any, we need only your GST return, IT return and 1 year balance sheet. We don't analyze your balance sheet and we don't insist for stock statements. Straight away based on your collateral security, we give this ABL loan. Those who don't want to
submit their project reports, stock statements, etc., they can opt for this scheme. Only thing is, you need to provide collateral, and 65% of the value of that collateral will be given as your limit. And we have the most important thing is we have what is called YONO Business. That is an app that we can call it as bank on your mobile phone. All services, whatever I said, PABL, pre-approved loans, stock statements, all services, most of the services are available on that device. Those of you who have not downloaded that app, YONO Business, I request all of you to please download that app. All services will be available on mobile. And similarly, we also provide export finance, EPC, export packing credit. We provide both pre-shipment finance as well as post-shipment finance. Sir, to be frank, because there is time limit here, I will just briefly say the cost of funding will be after subvention, interest equalization. Effective cost will be anything between 4.5 to 5%. For MSMEs, for others, it will be around 5.5 to 5.6%. This is the finance. 90 days is the cover period for pre-shipment finance. We also undertake bill discounting. Pre-shipment finance, again, not only in Indian currency, we also give in foreign currency. Packing credit in foreign currency, 4 currencies are there. Dollar, Euro, Japanese Yen, and GBP, pound. These 4 currencies we finance. So once again, my request to you is, please approach any of our 4 branches. Again, I repeat, we have 4 branches, one at Hinna Industrial Estate, one at Beautybori, one at Central Avenue Road, and the 4th one at Ravi Nagar. 50 lakhs to 50 crores, these branches will give you personalized service. And those who wants to avail finance only up to 50 lakhs, we have SME CC, SME Credit Center at Mate Chowk. You can visit them to get your finance sanction. Thank you. Thank you very much. I will invite Mr. Navneet Deshpande, Head Communities and Events, NextGen Innovate Global Solutions Private Limited. Please. Good afternoon, everyone. I would just like to understand and share it with you that first I would like to thank SME Chamber of Commerce for allowing us to present this unique program which we are bringing. I would like to first know that how many family business entrepreneurs are sitting in this room? Second generation, third generation? Good. So this is a thing which we are bringing. Firstly, about NextGen Innovate, we are a innovation and solution based company, and we involve our stakeholders through our community based events, programs and initiatives. So one of the communities, we are bringing up this program. This is at present, we have understood from the events, from the activities that we do, there are a lot of gaps, there are a lot of things and challenges at present are being faced by the family entrepreneurs. The next generations, the transformation, the succession planning, and lot of issues are presently there. So, along with the Babson University and Dela Leadership Club and ASM Group of Institutes, we are bringing the family entrepreneurship program in India for the first time. The Babson is the US top university. It is a #1 university in family entrepreneurship program, and we are bringing this program here. So according to Indian School of Business, family businesses account for 63% of the GDP in India and employ around 90% of the workforce. And I think SME takes the most part out of this. However, only 13% family business survive till 3rd generation and less than 5% make it to the 4th generation and beyond. This is the study.
and it is with the research. So what I feel, there is a need, we thought there is submission in our country, the startups which are coming in, the problems which the next generation is facing, why they are not coming into the parents' business, why it is not moving forward. So we thought, we understood, we discussed, and we have curated a program. These are actually the challenges that family businesses are facing. Is what we have found is the family problems, that the next generation has something new to achieve, the old generation has some different values to take the business forward. Informal culture and structure, failure to embrace the innovation. As of now, innovation, digitization, all of these are the necessities. So, again, the reluctance to hire executives from outside the family and a pressure to hire family members. That is also one of the problems, wherein to hire a top level executives, the CEOs, the MDs from the outside of the family businesses. So these are also one of the problems, lack of trainings. So the lack of trainings, because of lack of trainings, there are lack of processes, lack of implementation of the systems into into your day-to-day activities, and founders are getting stuck into the operations rather than the expansions. So higher turnover and non-family employees. So that is also one of the problems. Source of growth, lack of external view that is required. That's why a lot of family businesses are are looking out for the wealth manager, for the trainings, for the advisors to support them in their growth. Lack of long-term strategic planning, absence of founders vision and determination into the next generation. The transformation of the vision is also a problem, and the next generation is also having some different kind of aspirations and determinations to take the business forward, and that gap is creating the stopping the succession for the family businesses, is what we feel. Now, considering all of these issues, we are presenting exclusive partnership program with the Babson. It has 100 years of legacy and ranked one in the entrepreneurship and more than 2 decades. So we are bringing this program in the month of October for all of you. So this is going to be the module. The program will be organized around 4 key themes that will be woven throughout the program. Entrepreneurship as a family, family communication and decision making, innovation and entrepreneurial leadership. In this program, we are expecting a parent-child duo to participate. And there will be only 40 families from all over India who we will be, the seats that we are taking, only 40 families who can actually participate for this program. Matt Allen, who is a Babson program faculty, and he is actually being called the person, the younger generation who is looking out to go outside to learn about the entrepreneurship, innovation, and family businesses in US. They look out for the Babson and they see that Matt is there. So Matt is going to be in DLC in Dela in Lonavala for 3 days with all those enrolled members, and it will be curated, completely curated program by Matt, by Diana, and by Eric Herbs. So all Matt will be there, and these two will be supporting and giving the sessions online. We will be having Farad Forbes as a keynote speaker for this program. Jimmy Mistry, Dr. Sandeep Pachpande, Apurva Chamaria, Ramachandran Gopal Krishnan, Aditya Pachpande. I want to tell you, as I'm standing here as a head of communities and events at NextGen Innovate, we are the youngest company where our founder is 16 years old. And we are the example of the family business, which is
who is a son of Dr. Sandeep Pachpande, who holds a ASM group of institutes. And NextGen Innovate is a new venture which has been created by Aditya to bring the innovation and entrepreneurship into the systems for the younger generations. So this is how the whole lineup, these are the DLC domain speakers, Dela Leadership Club, ASM Group of Institute, NextGen Innovate are coming together and bringing this program. Dela Leadership Club is the top leadership club, one of the top leadership clubs in India, where all the top entrepreneurs, startups, and innovators are coming together. So these are the top speakers who will be, whom we are proposing will be there to deliver the sessions on the subjects which I have mentioned earlier. Then these are the proposed guest speakers. You can see we have Rishi Chauhan and Kishwanlal, we have Lucy Chow, and all the top speakers who have experience into the business, into the subject, and to deliver the perfect narrative out of for in those 3 days residential program. Benefits. What is the benefits of this unique program? Is strengthening family relationship and trust, because this is where you all are meeting the same the companies, the founders who are facing certain kind of issues in the succession into the generations and into the family businesses. So we will be through the experts will help you out to strengthen the family relationship, gaining insights into successful family business models, the tools that will be applied, the digitization, the methods that can be applied by the founders to elevate their business and their modules. Then acquiring practical tools, as I mentioned, and effective for succession planning. This is a very important part as moving forward from second generation to third generation or third to fourth generation. Building a network of like-minded family business leaders, because all these 40 family businesses, like-minded leaders are going to be there, and enhancing the organizational development skills. So this is the program when you are going to get a knowledge and experience in running and managing the family business, as you are already doing. Those who are into the family businesses are already doing this, but now after this program they'll do it after with the methods. So power packed workshops, as I have shown you the list of the speakers who are going to be there. Then fireside and chat sessions with those speakers. You are going to meet top class people, top class entrepreneurs, leaders, one to one, to speak to them, understand their problem, network with them. As I said, networking with the best family businesses and experts from various fields, and Dela Leadership Headquarters and Dela Resorts. This is the place where it is going to happen in Lonavala for 3 days on 20th, 21st, and 22nd of October this month, this year. So DLC Batson Family Entrepreneurship Program, and this is the program which we are planning for 3 days. Now I would request you to scan this to get the brochures. I am having a brochure with me as well. The scanner, you can meet me, understand the program, and enroll yourself. And as here, let me tell you the cost of this program. If you decide to do it in USA for one member, it will be 12 to 13 lakhs rupees plus visa, plus airfare, plus I would say the stay and the hostels and everything. But for the family businesses, for the parent child, two people, we are bringing this program for 4.9 lakh rupees plus GST. And as I'm standing here on this forum, I will be offering to the people who will enroll from this program a straight away 10% discount. So on 4.9 lakhs, you are going to get a 10% discount instead. And I'm sure that this program with such lineup, the ROI will be
something more than the investments that is to be looked after. Along with this, we are having one more initiative that we are bringing is a family business forum. So we are doing a forum for the family businesses who are facing such issues, problems, or who wants to enroll and network with the get a network with the family businesses, where we will be doing a listing of emerging 1500 family businesses in India. So I request all the family business owners to please scan this and register your business here. It is free of cost, nothing to be charged for this. But you all are requested to be a part of this forum, wherein we will, I request all you to enroll, and there are a lot of activities which we will be doing over the years. And out of that, the first activity is the vaccine program. So that is all about from my end. Thank you so much. Any questions? I'm okay to answer. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. And now we are coming to the end of the conference. Last but not the least, Lady Kushnuma Khan is here. So, Rayas is your Kushnuma. So, good afternoon, everybody. Sorry, I'm not going to be taking much long time and being a hassle between you and the food. It's already laid down. But since I'm given the opportunity to wrap up the session, I will. I have a presentation with me here, but I have to wrap up within 15 minutes so that everybody can go for their food. In fact, I am also hungry because I am up for 4:30 and I've traveled all the way from Bombay to here to just be present for this program. So we have heard uh, today's session was on investment, and every speaker has their own thought of process, and everybody has spoken a lot about investments. Before I proceed, I would request everybody to big lot of applause to each and every speaker who have spoken so well. And I would just be adding few tips, and to clear the concept of investment. Now, about me, I'm a practicing advocate and solicitors from Bombay. I have a firm, KK Associates, which is based in Mumbai, Delhi, Pune and Dubai, and Hyderabad as well. So we are into corporate litigation and corporate advisory. We also do a lot of works related to real estate advising and documents. We have been for several years working very closely with the MSMEs when it comes to their samadhan, or when it comes to their tender, and also startups. We have been advising startup right from ideation up to the stage of their the investments angel. I'm also one of the angel investors with one of the funds where I invest into the startups as well. So now coming back to the topic of investments. So first of all, I want to make clear the concept of investment. What is the meaning of investment? So when I say what is an investment is certain amount of money which you put into certain project or certain plant and machinery or certain asset. When I could say an asset to produce or generate something out of it for future profits, or you build an asset to create further asset to increase the value of that asset. So that is the whole concept of an investment. Now, what the banks provide to you, the finances which you take from the banks or the finances which you take from any financial institutions, that is not investment per se. Where it comes to the business person, to any business person, that is a borrowing from the company for the purpose of your businesses, for the purpose of your investment. Now, how you go, or you are putting that money which you have got into your hand into what sort of business or you projects you put in, the money is gone into, is what is the investment that you put into. But what you take from the banks or the financial institution or what the banks give to you, that is not investment.
that is a borrowing which comes with its own interest, its own there is its own terms, there are its own top-ups which come into which you have to pay over the long run. The banks, when they give you the money, that is an investment by the bank because they ultimately earn interest on it. But that money which you take from the bank or any financial institution, that becomes a liability. But how you put into your businesses is your investment. So this is the difference, where people really, I know that people have this concept or they think that the money which is taken from the bank is an investment. That is not purely an investment. So that is the clarification one has to make. Now, how, as I was saying, that how you have to put the money into your businesses, that every business person has to look into. The first, there are three principal there are three principal modules in which a businessman will always put his the money which is borrowed or his own, either it is his own funds or it has borrowed from the bank. First is in the assets, fixed asset. The second is working capital, and the third is growth, the business growth. Now these are the three principal investments which every businessman would have to make. First is fixed assets. If you are a producer, manufacturer, then you will always first look into buying plant and machinery, buying an asset, building land, whatever the plant, whatever the nature of the product that you make or you manufacture, you will always first look into buying a place for yourself. How Mr. Shravan, he has explained about Mihan. So that's the concept of putting investing your money into a land, an SEZ. Then how the plant and machinery, what is the type of plant or machinery which you use to make a product. Then that's the fixed asset what you put, or these are the fixed assets. Then comes second is the working capital. Now what the I have seen many times, there are documents which are, there are loans which are taken by the banks by these business people, which involves working capital. Now people always find themselves into trouble because they don't have the surplus of working capital. The working capital is really when you buy a raw material, how you are upkeeping your plant and machinery. You have to pay the taxes for your land that you have taken, and your electricity for running the machinery, your procurement, your distributions, all these, those are all your working capitals. I mean, each one of you would know what the working capital each one of you have in your business. Now comes the growth. The growth is the major part of it. People try to have more on fixed assets, more on production, more on working capital, but least they would bother to spend or to invest when it comes to growth. Now when you talk about growth, then growth can be in you can have growth in it may be on many phases. One would be promotions, advertising, your human your personals. So those are separate sections where you have to see that how you grow. So unless you don't try to the, as we everybody is saying now, each and every speaker has talked about how digitized we have become. The world has become digitized. There are so many social medias now. You don't have to promote by putting posters everywhere in each and every wall. Now there is and taking permissions of various agencies to put up your posters. But there are now social medias which you require to have your own account, publicize your own product, publicize your own services, and that's where. So how much you spend on that production? That's where that is the investment that you make. Similarly, how much you invest on your own people. Like I think Akhilesh Ji Gupta Ji was speaking about the insurances, right? That you have to take insurance of yourself, of your employees. That's very important. But when it comes to insurances and policies, then one has to really be careful, because it is not necessary that every insurance policy will become applicable to you or you to your employees. But one thing which is always important is the medical claim, and medical insurance is absolutely important. Whether it is you, whether it is your employees or anybody, you have to have that medical policies with everybody. This is your investment. I would like to point out one thing. We have all gone through a phase of coronavirus. We have all seen that how people have left, right, and centered. They have passed away. They may be our loved ones. They may be our neighbors, people, friends, whomsoever we knew.
I lost my own brother in Corona, and the only thing why I am emphasizing more on these medical claims is because the family had to run a lot of problem because my brother did not have a medical insurance, and when he was hospitalized and he just passed away in 2 days. Though he did not die because of corona, but he died because of the brain hemorrhage that time. But that was a corona period we all had to face. And imagine the family had to spend 25 lakhs just for 2 days for brain hemorrhage. So and he did not had a medical policy. Did he had the medical policy, then this problem wouldn't have arisen. So that time when I realized that how important it is to have a medical policy, and I have several people, I have my own staff working for me. When then I decided to have a medical policy for all my staff. Whatever insurance policy, life policy, they may take care of themselves. But medical policy is the I think would be the responsibility of each and every owner who is sitting here. At least this much, this is that what we owe to our people who work for us. That is, this is what we need to do. So the more it is like you more you give, the more you get. Now, I'm running very fast. Please, anybody who wants to have a more description on this can have my slides from here. Because as I said, I have a very limited time in my hand. Now, the second point which I want to highlight is your SMEs always find a problem for having for either it is taking funds, getting some sort of funding help from a bank, because there are so many things. Everybody says that this is not required, that is not required, but when you go, there is everything comes out in a page. There is a checklist which everybody gives you in their hand, and then you have to tick mark what you have, what you don't have. If you miss out something, you don't get, you're not eligible. But this is also an important aspect of it, that why is this checklist? Why are we not eligible to take it? Why is it that despite of so many policies become made available for the MSMEs, still there are MSMEs who do not get these facilities and these funding schemes, because we do not compromise, and we are not adaptable. We do not change ourselves. We do not change our style. So it's important, if you want to grow, then you have to change your style. You have to move along with the time. If you don't change, if you don't move along with the time, time is not going to wait for you. So it is very important that you move around and you change with the time. There is situations which come in where MSMEs come across so much of legal issues, but they don't want to go to a lawyer because they feel that going to a lawyer will be a waste of time and waste of money. The lawyer will charge so much. I am giving an example. Right at the time, there was one a very what I can say, a small entrepreneur having a proprietary business of providing securities. These where we provide securities to at societies and all these places. So he was having a society security services which he was providing to various societies and some sort of companies. Now this man got a tender from some company in 2013, and he started providing services 2013. There was some issue which happened. Since then, 2013, his payment was stuck. He was not getting payment. He approached to me in 2015 and said, he's not getting the payment. I said, okay, we'll do something. We sent notices, we didn't get a response. 2016, I asked him, he said that I'm still providing the services, I'm still not getting paid. I told him, please shut down the services, send them a notice that your contract is terminated. He got a little scared. He said, if I terminate the contract, I would have to serve my people because I'm not having any other thing to do. And I have list of personnel, the security guys who work for me. I said, don't worry, there are so many things, Allah shuts one door, then He opens 70 other doors. We believe, I am a Muslim by religion, and we believe that Allah, if somebody shuts one door for you, Allah opens 70 doors for you. So there is nothing, this earth when you have come, somewhere or the other, the food of your destiny is there for you. So I told him, don't worry, you will get the work, but just close this. So he closed. 2016, I filed a case in Samadhan MSME. So I said, you don't have to do anything, I will do it. I filed this case. I didn't charge him anything for filing his Samadhan or taking his case ahead. When we filed a case, he had an outstanding of 30 lakhs. So we filed a case for 30 lakhs in Samadhan. Now,
this is the worst thing which I find in our system is that either there was no, the application, we write in the book that it will be heard in 90 days and you will get a relief, but that doesn't happen at all. So we were harassed by the other side not coming, we were harrowed by the department, by the MFC council, because sometimes the council is there, other time they are transferred, nobody is there, 4 months happened, nobody is taking up. So the whole lot of rigmarole we have to go. In 2022, February 22nd February 2023, I got the order finally in my favor for my clients. And you know what was the order? For 30 lakhs, I succeeded an order of 2 crore 70 lakhs for him. That is what I got for him. 2 crore 70 lakhs. And imagine the man who was that point of time, he was like completely, that he was blank. He said that I am lost, I have to go back, I have no food to feed my children. What? Today when he got 2 crore 70 lakhs, imagine. I mean, he said that this I wouldn't have even expected, and imagine even over 5 years if I would have served. So what you are giving me today? So he was so honest. He came to me with a check. He said that give me only 30 lakhs. Rest of the money, please take it. I said, no, this is your money. You please keep all the money for you. It is your money. So, this is why I'm saying that MSME is not self-resilient also. You feel you have something in your hand, you don't take the opportunity to fight for it. We have to fight for it. Whether it is government, whether it is anybody, when there is something, you have to fight for it. See in yourself where is the lacuna, where is it that you default, and where is it, what is it that is lacking within you, where you are not reaching where others would have reached. Imagine when you see a startup would come with an ideation, they would have so many people, angel investors, level 1, level 2, level 3, then they will have financial funding, and then after down years, 5 the line, they will go for public IPOs. After IPOs, they will sell the company, the promoter will make the money and be in ash. Why is it not happening for MSMEs? Because MSMEs are still not changed their mindset. They still think the same way what they are thinking. So somewhere down the line, we have to change. People, the children of 30 and 40, not within under 30, they are having 200 and 300 crores of net worth. What MSME is not happening. So there is something which is going wrong within us, which we are not trying to change. So that is what is important that we have to find, and that has to be changed. If we change that, then of course the world will change for us. First change yourself, then change the world. Warren, I would like to quote what Warren Buffett has said once, is this, that you try to invest on yourself, work on yourself. When you invest on yourself and work on yourself, things will automatically start changing. So now let us think, let us decide that are we ready and willing to work on ourselves and invest on ourselves. Then we can see the change around us. Unless we are not willing to be open to that, then why do we? I mean, then there is no point in just sitting and saying that this is not happening. That is not happening. First, find out why it is not happening. So that is lying between us. The third important point is this, that uh, it is always better that whatever money you see, at times what we do is we make money, we have profit, we make money, and then what we do, we are so focused, we are so wanting to do something with our promotion and production, that profit what we have, we again put into the market, into our production. We don't know whether we may produce, and with that money I may have produced double or triple than the requirement or the supply which is required in the market. What do I do with the money, with the product which I have? Okay, so then I cry myself that, okay, my God, this is what I have produced. I was supposed to produce 10 lakhs, I have produced like 30 lakhs. Now where do 20 lakhs I have to do it where? Either I have to dump it somewhere and wait for the time and just start distributing it at some occasion, a Diwali gift or a something, some gift like, or I have to wait and sell it on a discount, yet it be a loss to me. So I have to take that calculative decision, and that what I am trying to produce, why not the profit which comes to you, out of that 20% of your profit, why don't you invest it in some place, put it in some stocks, put it in some place, the best, you have to have that calculative decision. It is always well said that let your money earn your money while you sleep, let your money make your money while you sleep. So why not create that situation that if you have 100%, you have made good profit,
take out 20-30%, whatever your capacity is, and put it in somewhere else. Put it in an investment, so that if the other 70% or 30% you are putting something in your business, you're giving some good efforts to your employees, then that 20% is multiplying automatically for you. Then it is not pinching for you. So that is where the and one of the most important thing is that every MSME should have an emergency fund, which I think most of us we do not maintain that emergency fund. But it is important to have that emergency fund. Again, I realize this. I always have the habit of from very beginning to keep this little. Whenever I do my accounting somewhere, I have small amount every month. I put it somewhere. I put it, and I don't use that money. I just put it and forget it. I don't use it. Believe you me, when Corona came and everybody was, shut, and my juniors and my staff, they were like, what will happen now if everybody is shut and we don't know how many months and or even a year we would be shut. And everywhere we used to hear that this have been so many people have been removed from this lawyer's office. This lawyer has shut down the office. They're now operating from home. The office is sold off. So all these things were there. So many employees have been sacked. So many lawyers have been went out of job and all that happening. Believe you me, I saved myself and I saved my company only because I had maintained that emergency fund for myself. I could pay all my juniors. I not a single junior. I never deducted any salary from anybody's. Not even a 25% cut I took. I paid the salary what they had. I gave them the increment what they were entitled to, just because I have maintained the emergency fund. I did not know why I did it. I used to maintain it. I feel that maybe because this sometime was supposed to come this occasion, therefore I was doing it. But I did it, and it was only because of that emergency fund which I have maintained for my company. I could, survive for such a long time, for almost a year, because it was not easy for everybody to survive. I could survive my house. I could survive, my. So this is it. So we have to be resilient. One, now this is my last. I have spoken on Samadhan. I have spoken on emergency fund. The last thing which I want to tell you is this. During Atmanirbhar Bharat, Prime Finance Minister has announced a fund that 10,000 crore will be given to the banks for creating FOF funds. Okay, and that would be sort of a venture capital fund or a mutual fund which will help the MSME, which will be given to MSMEs, like how you give to startups. Okay, a startup has this angel investing scheme. Similarly, this was a scheme which was introduced and announced by in Atmanirbhar Bharat by the finance minister, that this fund will be made available for MSMEs, to upbringing them, to invest in them, to promote the MSMEs. Now, this fund has been launched in the name of a salient. What's that? I said right. Salient Self-Reliant India Fund. That's called Self-Reliant India Fund. So, and under the Self-Reliant India Fund, that is the mother fund. Under that fund, there will be several daughter funds which will be catering to the needs of the MSME. So I don't know whether the banks have implemented it or not, because this has already been announced in 2020. So I would request each one of you that this is some kind of a fund which is going to really help the MSMEs in growth factors. It's really going to help you, because 10,000 crore is not a small amount for MSMEs which is there. So please, each one of you, when you go to your banks, it is your right, it is your money secured by the Indian government for each of you. So it is your right to ask your banks whether this money, whether this scheme has been implemented or not, whether this fund has been created or not. And believe you me, if this fund is created to you and it comes in your hand, it will create miracle for you. It will take a lot of time, to discuss on these one, but it is going to make miracle. The third and the last point which I want to tell you guys is this. Now, as you see IPOs coming up for startups, startups, they immediately within 5 years, every startup you see in India today is bringing some sort of, is come up on the floors of the MSMEs, and they are publicly funded.
Why can't we SMEs do that? What stops us? That is our right. That fund will create so much of avenues for you. You will not be depending on any bank or any financial institution. That will be your money, which by your money invested by the public. Yes, you are answerable to the public. And imagine the amount of the boost that an MSME would get if they want to, if they decide to bring an IPO. And thirdly, it is always important for each and every MSME that you should always look into an inorganic or organic sort of a joint venture. So inorganic and organic joint venture is when two people have a similar kind of business. To lower down the cost of production, cost of marketing, you come into organic joint venture. Inorganic joint venture is like if you are a producer, somebody has the good marketing and sale for that product, you can still come into joint venture because there you are, he will have the cost, he will have the economies in production, you will have the economies in sale and marketing. At the same time, both of you can enjoy the benefits of both the worlds. So it is always important to to have various, open yourself for various aspects. There are several things which can be done on investments. It is just not only that only banks can secure you, only banks can provide you finances where you can grow yourself. You yourself can grow yourself. You are self-reliant. You are MSMEs who are considered to be the backbone of Indian economy. Being a backbone in Indian economy, why can't you strengthen your own bones? So you please become self-reliant, self-resilience, and start thinking out of the box rather than just keeping yourself always to one box. Think out of the box, think differently. When you think differently, things happen differently. Thank you. Thank you, Kushnaji. Thank you very much for your speech and encouragement to the SME sector. Any other questions to Kushnuma or any other panelist before we wind up? Okay. So everybody is hungry. On behalf of SME Chamber of India and Maharashtra Industry Development Association, I am very much thankful to State Bank of India, Mahagenco, Tata AI Urja, MCX, Metal Energy, Tata Power Solaroof, and all the stakeholders to make this event a grand success. आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी पैनलिस्ट को और सभी स्पीकर्स को एक बार जोरदार तालियां. Thank you very much and ऐसे ही साथ में बनी रही है. You become a member with the SME Chamber of India. Those present here today, those who are not member, they can become a member with a 10% discounts on the membership fees. And if you have any questions, do write to us. If you know any information, do let us know. And with these words, I'm Mahesh Salunke, signing off for this event. And this event is time closed for the today. Thank you very much. Lunch is here, so enjoy the lunch and have a networking with everybody, those you have not met. Thank you.